अरे आवाज नहीं नहीं मीटिंग का सीयर
The real growth of a country is in the heart, minds, bodies, and souls of the young men and women of the country. With this famous quote by the famous physicist Sir C.V. Raman, we start this auspicious day, which in India is celebrated as the National Science Day, which marks the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkata Raman, thus making this event more auspicious. A very good morning and warm welcome to all present over here. It's me, Ishan. And it's me, Mehak. Your host for India's largest virtual competitions cum exhibition, Jigyasa 2022. A great platform for students to showcase their innovation and creativity in finding solutions for the issues of the modern world. Lamp lighting, which is an expression of Indian culture where we invoke the goddess Saraswati, who is the symbol of knowledge, music, art, wisdom, and nature. Let's start today's event with prayers to the Almighty and lighting the lamp. दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपहर्तुं मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। May Group of Schools is proud to host 154 projects where the participants use their creativity and critical thinking in order to come up with some innovative solutions to solve the challenges which are rooted in real life. We have projects from around the world. So, with no further ado, let us introduce dignitaries and chief guests for today's event. We are honored to have with us Mr. Ajinkya Kotawar, who is the founder president of NAM Foundation, Governance Chancellor nominee, Golbana University, Gadchiroli, Director Research and Development, Software Technoserve, India Private Limited, Nagpur, and CEO, Techno Legal Services, Yavatmal, as a chief guest to grace the occasion. By profession, a mechanical engineer in 2013, Mr. Kotawar works passionately in research and practical education domain to innovate ideas and cause a benefit to society. He has been nominated for Padma Shri Award in 2020. His core objective is opening new doors for innovation and focus on the practical learning for students. Working with educationalists and Ramon Magsaysay Award 2018 winner, respected Mr. Sonam Wangchuk from Ladakh for development in practical learning for the school education system. He also is jointly working with APJ Abdul Kalam Foundation, Rameshwaram, for enhancing the education system. Recently, he had discovered the cheapest technology for CNG development from garbage, and till date, he has achieved more than 50 awards. We welcome you, sir. We have with us our own respected Mrs. Abha Meke, Director of May Group of Schools and our guiding lamp. She is an exceptionally energetic and enthusiastic director with a charisma that captures the imagination of students and demonstrates an excellent management skill. She believes that intelligence plus character is the goal of true education. Ma'am has handled many projects at national and international level and has represented India at Gloucestershire, United Kingdom for the Global School Partnership Programme. Last but never the least, we have with us respected Mr. Ajinkya Ambarkhane, Director, Training and Innovation of Meki Group of Schools and backbone to the Meki Group's technological infrastructure. Basically an engineer, he has been responsible for designing school development initiatives and implementation strategies, driving government-funded projects for schools, designing and implementing new work processes, enhancing technology-enabled learning. He is also responsible for designing and executing training modules not only for teachers across many group of schools, but also for more than 20,000 students. 20,000. Now, let us hear a few words of motivation from our honorable chief guest, Mr. Ajinkya Kotawar, and he also is going to be setting our exhibition open.
Uh, So we can't hear you. yeah. No, am I audible? Yes, sir. Yeah, thank you. So first of all, a very happy Science Day to one and all present over here. I really appreciate Jigyasa 22. Such kind of event is organized, and especially I appreciate that this event is online, organized by online purpose. Uh, so I can say so many scientists or junior scientists are present here. एंड क्या होता है कि कई बार मेरा इंट्रोडक्शन अभी जब करके दिया कि एज अ साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट है जो आने वाले हैं एंड सो मेनी पेटेंट्स एंड ही इज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री एंड ऑल। सो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे लगता होगा कि यार साइंटिस्ट हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, हम भी बनना चाहते हैं, या फिर आज जो यहाँ पे बताने के लिए आए हैं, कुछ तो भी एड्रेस करने के लिए आए हैं, ही इज आल्सो साइंटिस्ट। लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय जर्नी विथ यू। ओके, कई बार क्या होता है ना कि आई थिंक while introduction, Ajinkya sir and madam told me that so many students are joined from rural area also. तो मेरा एक फोकस ये रहेगा आज कि मैं मैं बहुत उन्हें शुक्रिया दे करना चाहता हूँ, या फिर उनका कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि रूरल एरिया से भी यहाँ पे एक स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, कई बार हम जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं हम एक डिमोटिवेट हो जाते हैं आजू बाजू के लोगों को देख के। या फिर लेट अस कंसीडर इफ यू आर फ्रॉम स्मॉल तालुका प्लेस, और अगर नागपुर से कोई है, पुणे बम्बई से कोई है, अगर आप नागपुर में रहते हो तो पुणे बम्बई के स्टूडेंट्स को देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो कि वहां पे किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा हमारे दिमाग में कंसेप्ट होती है। या फिर कई बार एक स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे तो कोई रिसोर्सेस ही नहीं है काम करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। और यही आप अगर मेट्रो सिटीज में जाते हो तो सो मेनी रिसोर्सेज यू गेट फॉर वर्क, टू गेट वर्क। लेकिन आपको जस्ट एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। ओके, पाटनबोरी मेरे गांव का नाम था, एंड नियर अबाउट 2000 लोगों की वो बस्ती थी। और जैसे कई सारे अभी यहाँ पे स्टूडेंट होते होंगे जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कई उटपटांग चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मेरा भी कुछ वैसे ही था। सो माय पेरेंट्स को एक बहुत ज्यादा ये लगता था कि अरे यार ये आगे जाके क्या करेगा, कैसे करेगा बंदा, कुछ पता नहीं, पढ़ाई में तो कुछ इसे आता नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छे कुछ परसेंट भी मिलते नहीं है। सो दे वेर वेरी क्यूरियस, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कैसे करेगा, लगे रहते थे उनके दिमाग के पीछे। और मेरे दिमाग में क्या था, मैं पाटनबोरी इस गांव में हूँ, सो दैट मुझे परसेंट अच्छे नहीं मिलते हैं। सो द थिंग इज दैट मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं रूरल एरिया में हूँ करके मेरे मुझे ज्यादा परसेंट नहीं मिलते हैं। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रमोट किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रमोट करने के बाद में फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे यार यहाँ पे भी एजुकेशन में कुछ मजा नहीं आ रहा है। यवतमाल में, आई वॉज इन यवतमाल एट दैट टाइम, सो आई वॉज थिंकिंग कि यवतमाल में भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। after after my 12th I was promoted to Nagpur, that is in VNIT. I started work with some VNITians, लेकिन उनके साथ में काम करते वक्त भी आई थॉट सेम थिंग कि यार यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा, कुछ तो भी कमी है यहाँ पे। आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वाज promoted to IIT खड़गपुर एंड NIT सिलचर। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, और वहां पे काम करते वक्त भी मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक ही थिंग थी कि यार मुझे तो यहाँ पे भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ रिसर्च करने के लिए नहीं मिल रहा है। बिकॉज मेरी मेरे मुझे खुद को पता था कि मेरा इंटरेस्ट जो है उटपटांग चीजें करने में है, सिलेबस में ज्यादा नहीं है। सो ये सब चीजें होने के बाद में मुझे एक ही चीज समझ में आ गई, आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी एरिया में रहो, एजुकेशन सेम टाइप का ही होता है। एरिया के वाइज एजुकेशन की क्वालिटी कभी कम नहीं होती है ना ज्यादा होती है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जिस फेज से भी गुजर रहे हो, तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि एरिया के वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आप जो भी सिलेबस पढ़ते हो, या फिर एजुकेशन लेते हो, जो भी चीजें करते हो, अलग अलग करिकुलर एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना है, रिसर्च चीजों में इन्वॉल्व होना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिफोर कंप्लीटिंग द 10th यू शुड हैव टू डिसाइड द पाथ फॉर योर करियर। कई बार ऐसे होता है कि 10वीं
10वीं के बाद में स्टूडेंट डिसाइड करते हैं, अरे मुझे कितने परसेंट मिले, हाँ मैं आर्ट्स लूंगा, या फिर आई विल चूज साइंस और आई विल गो फॉर कॉमर्स। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू डिसाइड योर ऑप्टिमम करियर फील्ड बिफोर 10th क्लास ओनली, बिकॉज 10वीं के बाद में आपकी फील्ड कैटेगराइज हो जाती है। सो अब ये फील्ड्स कैसे डिजाइन करनी है या फिर डिसाइड करनी है, कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मेरा जो इंट्रोडक्शन आज हुआ है, साइंटिस्ट करके इंट्रोडक्शन हुआ है। सो आज के जिज्ञासा प्रोग्राम के लिए सो मेनी जूनियर साइंटिस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ओके, आप सभी लोग साइंटिस्ट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक चीज करियर में ध्यान रखनी है कि सभी को साइंटिस्ट ही होना है। ओके, क्योंकि साइंटिस्ट नाम की डिग्री ऐसे कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सभी डिग्रीज में साइंटिस्ट है। इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो उसमें भी साइंटिस्ट अवेलेबल है, आप मेडिकल फील्ड करते हो तो उसमें भी साइंटिस्ट अवेलेबल है। इफ यू आर टीचर, तो टीचर लोग भी एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ में काम करते हैं, दे आर ऑल्सो साइंटिस्ट। सो आप किसी भी फील्ड में काम करो, आप साइंटिस्ट बन के आपको काम करना है, ये चीज आपको एक दिमाग में रखनी है। एंड साइंस मतलब आज आज हम साइंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइंस डे का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ हम साइंस या सब्जेक्ट के ओरिएंटेड बात करें। साइंस एक ऐसी एक स्ट्रीम है, साइंस एक ऐसी नीड है। साइंस मतलब अपने आजू बाजू में जो कुछ भी चीजें है उसमें सभी इसमें साइंस है। सो आपको अलग अलग फील्ड के हिसाब से सोचना है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हो तो भी उस फील्ड में आपको साइंटिस्ट ही बनना है। ओके, ये एक चीज आपके दिमाग में रखो। अब साइंटिस्ट मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो एक छोटा समय मेरा एक बचपन की एक याद मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई वॉज इन 7th क्लास। ओके, एंड मेरे पापा डेली ट्रैवलिंग करते थे, नियर अबाउट 250 किलोमीटर उनका डेली का ट्रैवलिंग होता था। एंड जस्ट एंड्रॉयड फोन लॉन्च हुए थे उस जमाने में। तो पापा एक चीज मुझे ऐसा बोलते थे कि वो बस में जर्नी करते थे, 110 किलोमीटर आना और 110 किलोमीटर जाना रहता था। तो उनका कहना था कि जाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल वगैरह रहता है तो एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, और आते वक्त मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता था। सो देखो, अपने करियर में रिसर्च की शुरुआत कैसे होती है। पापा ने जैसे ही मुझे कहा कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होता है आते वक्त, क्योंकि उतनी बैटरी तब तब के जमाने में उतनी बैटरी नहीं रहती थी। सो वन थिंग कम इन माई माइंड कि पापा को मैंने पूछा कि गाड़ी में आप चार्ज नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट के बसेस होते हैं उसमें चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। सो पापा ने मुझे कहा कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। सो आई थॉट कि यार यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। एक्चुअली बचपन में क्या होता था ना कि हम रूरल एरिया में मतलब पाटन बोरी जिस गांव में क्या करते थे, रात को साइकिल चलाते थे। अब रात को क्यों साइकिल चलाते थे, क्योंकि हमने एक छोटा सा एक सेटअप तैयार किया था, बनाया था। जैसे कि हमें पता है पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर रहते थे, टेप रिकॉर्डर में छोटी एक डायनामो जैसी एक मोटर रहती थी। और मैंने क्या किया था, उस मोटर को निकाल के अपने साइकिल के व्हील को लगाया, और उस मोटर पे कुछ लाइट्स लगाए थे। और रात में फिर हम साइकिल लगाते थे, जैसे ही साइकिल रोटेट होती थी वो लाइट्स लगते थे, और वे हम बहुत सारा मतलब उसे एंजॉय करते थे उस एक्टिविटी को। सो वही चीज मेरे दिमाग में आ गई कि किसी अगर कोई भी चीज रोटेट होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो मुझे लगा कि यार हम जब बस में ट्रैवल करते हैं तो वहां पे भी खिड़की से बहुत ज्यादा विंड अंदर आती है। सो can we utilize that wind to generate electricity, and that electricity can be used for charging the mobile? So मैंने वही किया, दो डायनामोस लिए, एंड उस दो डायनामोस को मैंने एक फैन लगाया। फैन लगाने के बाद में छोटा सा एक मोबाइल को प्रॉपरली करंट अडेप्ट हो सके, वोल्टेज अडेप्ट हो सके, उस तरीके से एक छोटा सा सर्किट बनाया, और एक डिवाइस में पैक करके पापा को दे दिया। और पापा ने मुझे कहा, मैंने कहा कि जस्ट एक आप काम करो, ये जो छोटा सा अपना बना हुआ डिवाइस है, दो फैन का और छोटे से डायनामो का, वो डिवाइस आप जस्ट व्हीकल के विंडो में हैंग करके रख दीजिए। और मजे की बात तो ये थी, जैसे ही व्हीकल शुरू हो गई और व्हीकल की स्पीड 20 के ऊपर चली गई, वैसे ही मोबाइल की चार्जिंग भी चालू हो गई। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि रिसर्च ओरिएंटेड कई सारी चीजें आपके आजू बाजू में होती है। सो जस्ट यू शुड हैव टू थिंक ऑन इट। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, या फिर आपको अलग अलग प्रॉब्लम को नोटिस करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके लिख के रखना है। ये चीजें सबसे पहले अपने करियर में आप ध्यान रखो। सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैं सभी स्टूडेंट को एक अपील करना चाहता हूँ कि आपके आजू बाजू को टेक्नोलॉजी को आप देखिए, क्या क्या चीजें हैं। आपने आपके पेरेंट्स को आप पूछिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम
टेक्नोलॉजीज में आइडेंटिफाई करते हो क्या, उस प्रॉब्लम की फिर डिटेल नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। जैसे ही मैंने आपको एक बताया छोटा सा इन्वेंशन मैंने जो किया था कि एक पोर्टेबल मोबाइल चार्जर मैंने प्रिपेयर कर दिया, जो ट्रैवलिंग में अगर विंडो में मैं हैंग करके रखता हूँ तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली चार्ज होना चालू हो जाता है। सो इस तरीके की चीजें आप आपके डेली में कर सकते हो। सो दिस ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू योर सिलेबस ओनली। यू जस्ट शुड हैव टू एक विजन आपको देना है या फिर एक विजन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में। और एक स्टूडेंट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए कि कई बार एक ऐसे होता है कि यार ये तो मेरी आइडिया है, मैं मेरे दोस्त को क्यों शेयर करूं, मैं मेरे टीममेट को नहीं शेयर करूंगा, ये मेरे पास ही रखूंगा। तो सबसे पहले आपकी एक सोच आपको एक बदलने की जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि आप जो भी चीजें करते हो, पढ़ाई करते हो, मार्क्स अच्छी तरीके से गेन करते हो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ाई का इस्तेमाल आगे फ्यूचर में किस तरीके से करना है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आप पढ़ाई करते हो, इस पढ़ाई में दी हुई सारी चीजें डे टू डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है, उसे उसका एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आप रहिए। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि चलो आपने कुछ 10-12 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिए, आप एक ग्रुप बना के चलिए। लेट अस कंसीडर 5 दोस्तों का आपने एक ग्रुप बनाया है और सभी 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वी विल स्टार्ट टू ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम्स। और आपने पूरे हफ्ते में जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं, सभी लोगों ने बैठ के डिसाइड करना है कि उस प्रॉब्लम पे हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च और फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड्स द साइंटिस्ट। ओके, तो सभी को दिमाग में ये चीज रखनी है कि सभी को साइंटिस्ट बनना है और आगे जाके इसी फील्ड में काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। अभी मैं एक देखता हूँ कि सभी बच्चों के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि ग्रेजुएशन के बाद में या फिर 12वीं 12th होने के बाद में मैं पुणे में जाऊंगा, मैं बंबई में जाऊंगा और वहां पे बस जॉब करूंगा कंपनी में। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ओनली 8% जॉब्स आर अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, 8% जॉब ये प्राइवेट है और 16% जॉब जो है वो गवर्नमेंट की जॉब्स है। अब आप डिसाइड कीजिए, सिर्फ इतने ही जॉब्स होने के बावजूद हम मतलब बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ही वजह से ज्यादा है कि सभी लोग एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ भाग रहे हैं। मतलब हम जब मतलब हमारे बचपन में या फिर एक ऐसे ट्रेंड निकला था कि सभी लोग बीएड डीएड के पीछे भागते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, इतने लोग वहां पे चले गए कि बीएड डीएड ऐसी ये फील्ड ही बंद पड़ गई। मतलब आज उसका कुछ भी ट्रेंड नहीं है। उसके बाद में जब हम एजुकेशन ले रहे थे, तब एक नया ट्रेंड निकला था कि सभी लोग इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं। ओके, तो आज की इंजीनियरिंग की सिचुएशन हमें पता है कि बिल्कुल एक 2-3 ब्रांच ऐसे बचे हुए हैं कि जो मार्केट में स्टेबल है, बाकी सभी ब्रांचेस आज बंद होने के कगार पर है। आगे आने वाले दिनों में ये ऐसे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी लोग एक ही फील्ड की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब भी पढ़ाई करते हो, आप जब 10वीं तक पढ़ाई करते हो, तो यू इंट्रोड्यूस विथ so many fields like science, geography, mathematics, language, so many languages are there, history, ऐसे अलग अलग फील्ड के साथ में आप इंट्रोड्यूस होते हो। सो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती है। इफ if you like history, then that may be your optimum field for career. There are so many opportunities to do career, like अगर सीधा डिजिट में मैं बात करूं तो आफ्टर 10th you have near about 636 अपॉर्चुनिटी टू डू योर करियर। और जो हम एक पैकेज के पीछे लगते हैं, मनी ओरिएंटेड रहते हैं, सो ये जो 636 फील्ड है, ये सारे पैकेज ओरिएंटेड और मनी ओरिएंटेड फील्ड ही है। आपको सिर्फ उसमें देखना है कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, और उस फील्ड को अचीव करने की आप कोशिश कीजिए। मैं यही आपको कहूंगा कि आप जो भी एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में करते हो, तो कंटिन्यूअसली ऐसी एक्टिविटीज करते रहिए। और आज जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर अलग अलग साइंस एग्जीबिशन, इतने सारे आपने प्रोजेक्ट किए हैं, देखिए पार्टिसिपेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन पहला आता है कौन दूसरा आता है, इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए।
ओके, छोटे छोटे प्रॉब्लम, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है कुछ तो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वो प्रोजेक्ट बनाया होगा, उस प्रोजेक्ट को आप एक्चुअल डे टू डेली लाइफ में प्रोडक्ट के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। तो ये आपकी प्रोजेक्ट की नेक्स्ट स्टेज रहेगी। और हो सकता है दैट कैन बी अ न्यू प्रोडक्ट फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप। हो सकता है उसी प्रोडक्ट के लेके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या फिर उसी प्रोडक्ट को लेके आप आपकी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल ग्रेजुएशन के बाद में ही आपके दिमाग में आना चाहिए। आप कभी भी इस पूरे जर्नी में ध्यान दे सकते हो। मैं एजुकेशन जब ले रहा था, आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मतलब मुझे जस्ट ऐसी चीज, मतलब उटपटांग चीजें अच्छी लगती थी। गाँव में जाता था, वहां पे किस तरीके कैसे काम होते हैं वो मैं देखता था, खेती देखता था, या फिर कोई अगर रिपेयरिंग का काम किसी मतलब स्टोर पे चल रहा है तो वहां पे बैठ के देखता था कि साइकिल किस तरीके से रिपेयर होती थी। मैं मेरी खुद की साइकिल खुद रिपेयर करने की कोशिश करता था। ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रबल शूटिंग्स में खुद के खुद सॉल्व करने की कोशिश करता था। सो अपने आप सभी में एक साइंटिस्ट छुपा हुआ है। ओके, सभी लोग ऐसी उटपटांग चीजें करते हैं। कोई भी अगर पापा ने खिलौना लाके दिया है तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो खोल के देखा होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ये गाड़ी किस तरीके से चलती है। अगर कोई डॉग है तो वो किस तरीके से बातें करता है हमारे साथ में। एक अदर गैजेट है तो उसके अंदर क्या है। ये एक क्यूरियोसिटी सभी के अंदर होती है। सो इस क्यूरियोसिटी को आपको जिंदा रखना है आपके अंदर। कई बार ऐसे होता होगा कि मम्मी ने बोला, अरे यार ये खिलौना 24 घंटे भी नहीं हो गया और आपने तोड़ दिया, पापा भी आपको डांटते हैं, तो वो छोड़ दीजिए ये बातें। देखिए, पेरेंट्स अगर यहाँ पे इफ पेरेंट्स आर अवेलेबल तो उनको ये मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को, बच्चों का जो क्यूरियस एक माइंड होता है उसे जिंदा रखने की कोशिश कीजिए। उसे आप डंप मत कीजिए, उन्हें आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। सो यही एक चीज होती है कि जो उन्हें एक अलग करियर की तरफ लेके जाती है। क्योंकि आगे जाके मुझे नहीं लगता कि आप कभी क्यूरियस माइंड से, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे क्यूरियोसिटी में एक सैचुरेशन आना चालू हो जाता है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको आगे जाके काम करना है। और जैसे मैं बच्चों के लिए एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए, ग्रुप बना के काम कीजिए। ग्रुप्स में बात, ग्रुप डिस्कशन आपको हर एक हफ्ते में करना है। एक दूसरे के दिमाग में आए हुए थॉट्स एक दूसरे के साथ में शेयर करना है। कुछ थॉट्स को हम आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं उस तरीके से आपको सोचना है। आजकल अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग लेबोरेटरीज आपको मिली हुई है, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस एनवायरनमेंट, ट्राई टू collaborate the things with schools or other laboratories। आप जाके डिस्कस कर सकते हो, आपके दिमाग में आए हुए थॉट उसे प्रोसेस कर सकते हो। उस थॉट्स को आपके प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप आपके स्कूल में जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। सो ऐसी चीजें आपको आपके कंप्लीट करियर में ध्यान में रखनी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रिसर्च इज नॉट वेरी बिग बिग डील। रिसर्च की शुरुआत आपके सभी के घरों से ही होती है। छोटे छोटे चीजों में रिसर्च हो सकता है, छोटे छोटे एक्टिविटीज में ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आपके सिलेबस के फॉर्मूलेज यूज करके कुछ आप प्रोडक्ट बना सकते हो क्या, जो घर में इस्तेमाल कर सके। जैसे मैंने मेरे पापा के लिए एक छोटा सा चार्जर बना के दिया था। सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिसर्च, वो फाइनली मैंने पेटेंट किया। ओके, सो रिसर्च इसी तरीके से होते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम में आपके आजू बाजू में जो भी रिसोर्सेस है उसे आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, दैट बिकम रिसर्च। और उसी रिसर्च को आप फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आज डेफिनेटली आज के साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स डेफिनेटली किए होंगे। मैं रियली उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरीके से एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा तभी अच्छा होगा। ये सब दिमाग से, रैंकिंग इज डजंट मैटर, पार्टिसिपेशन इज रियली मैटर्स। सो आपने पार्टिसिपेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे जाके भी आप ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहिए और अलग अलग चीजें खोजने की कोशिश कीजिए। और अभी एक आखिरी में मैं छोटा सा एक एग्जांपल, एक रिसर्च बता देता हूँ कि रिसर्च किस तरीके से होते हैं। एक कुछ एक 10 साल पहले की बात है। आई वॉज डूइंग माई पीएचडी इन एनआईटी सिलचर। ओके, आसाम में मैं मेरी पीएचडी कंप्लीट कर रहा था। उस वक्त में मैं टी गार्डन में घूम रहा था। ओके, और एज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, जब मैं आसाम में गया तब एक क्यूरियोसिटी रहती है, अरे मेरे घर में जो चाय बनता है उसकी जो पत्ती है वो यही आसाम के ही बगानों से आई हुई है।
सो मैंने एक क्यूरियोसिटी रहती है, ये पत्तों से चाय पाउडर कैसी बनाई गई है। तो आपके टाइम पे तो इंटरनेट वगैरह सब अवेलेबल है, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। तो एक दिमाग में एक था कि चाय पाउडर कैसी बनती है। तो मैंने उनको पूछा, आई वाज जस्ट सर्फिंग इन द टी गार्डन, और उनको पूछा कि ये चाय पत्ती कैसे बनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो चाय का पौधा है, उस पौधों में से ऊपर के तीन पत्ते निकाले जाते हैं और तीन पत्तों को प्रोसेस करके चाय पाउडर बनाई जाती है। ओके। तो मैंने कहा कि अरे यार चलो ये तो ठीक है, ऊपर के तीन पत्ते आपने निकाल लिए, लेकिन व्हाट अबाउट दैट रिमेनिंग लीफ? नियर अबाउट 70% लीफ आर कंप्लीटली वेस्ट। ओके, 60 to 75% ये लीफ वेस्ट हो रहे थे। तो मेरे दिमाग में कहीं पे भी अगर ऐसे वेस्ट दिखता था, तो दिमाग में एक चीज आ जाती थी कि यार इस वेस्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। तो मैंने ये सोचा कि ये जो वेस्ट पत्ते हैं इससे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। और तभी मेरे दिमाग में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आ गया। मैं जब एक 6वीं क्लास में था, तो मम्मी बोलती थी कि शाम को भगवान के सामने बैठ के दिया लगाना चाहिए। तो दिया तो मैं लगा देता था, लेकिन ऐसे उटपटांग चीजें मैं करता था। एक दिन मैंने क्या किया था, हमारा जो उसे क्या बोलते हैं, जो मंदिर है घर का, मंदिर के बाजू में ही मतलब हम एक रैक होते थे, उस रैक में किचन में जो गुड्स के डब्बे होते थे, उसमें एक दिन मैंने क्या किया, उसमें से पत्ती ली और अपना जो दिया रहता था, दिए के ऊपर ऐसी इस तरीके से पत्ती डाल के देखिए, और उसमें से स्पार्क निकले उस पत्ती में से। और दैट वाज जस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। तो मैंने देखा, जब पत्ती मैंने दिए पे डाली तो स्पार्क निकले, शक्कर डाली तो कुछ नहीं निकला, जब गेहूं डाले तो कुछ नहीं निकला, बाकी अलग अलग पाउडर डाला तो उसमें से कुछ नहीं निकला। जस्ट दैट वाज ऑब्जर्वेशन। जब भी मैं चाय पत्ती उस दिए पे डालता था, उसमें से जैसे फुलझड़ी में से जैसे स्पार्क निकलते थे, वो वैसे स्पार्क निकले। एंड व्हेन आई कम टू आसाम, और जब मैं वो चाय गार्डन पे गया, टी गार्डन पे गया, तो वहां पे मैंने वो बहुत सारे पत्ते देखे। तो मेरे दिमाग में आया कि 60% लीफ जो वेस्ट जा रहे हैं, उस वेस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। मैंने उनको पूछा, इसका आप यूटिलाइज कुछ करते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हम कंप्लीटली कलेक्ट करते हैं और जला देते हैं। तब मेरे दिमाग में एक चीज आ गई। सिंस आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे पता था कि अगर कोई भी चीज जल सकती है, या फिर कोई भी फ्यूल हम ले कंसीडर करते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल या फिर केरोसिन, तो उसमें एक हाइड्रोकार्बन नाम का एक ग्रुप रहता है, वो एक्टिव रहता है। उसी वजह से कोई भी चीज इजीली जल सकती है। तो मैंने देखा कि जो चाय पत्ती थी वो भी बहुत इजीली जल रही है। तो डेफिनेटली चाय के पत्तों के अंदर ऐसा कुछ तो भी है जो जलने के लिए मतलब इफेक्टिव है। सो मैंने उसका केमिकल कंपोजिशन किया। केमिकल कंपोजिशन स्प्लिट करने के बाद में मुझे पता चला कि इस चाय के पत्तों में हाइड्रोकार्बन नाम का ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है। तो मैंने फिर उस पत्तों में से उस हाइड्रोकार्बन को बाहर निकालने की कोशिश की। वहां पे कुछ इंजीनियर्स के साथ में मिलके हमने फिर चाय के पत्तों में से हाइड्रोकार्बन सक्सेसफुली बाहर निकाला। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हुई कि जो भी हमने हाइड्रोकार्बन बाहर निकाला था, या फिर पत्तों में से जो भी हमने जूस बनाया था, उस पत्तों में से उस जूस पे हमने सक्सेसफुली डीजल व्हीकल भी चला के देखी, और हमारी डीजल व्हीकल भी सक्सेसफुली उस पर चली। और चाय के पत्तों से बायोडीजल बनाने वाला मैं पूरे वर्ल्ड में पहला इंसान था। सो कहने का नजरिया ये है कि देखो, एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैं बचपन में मैं करता था घर पे, मतलब पूजा घर में बैठ के, मतलब वो चाय पत्ती उसमें से डाली, वही चीज एजुकेशन लेते वक्त मेरे दिमाग में आ गई, अरे यार ये ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे अलग हो रहा है, तो इससे मैं फ्यूल भी बना सकता हूँ। सो ये बचपन में किया हुआ एक्सपेरिमेंट अडल्ट लाइफ में मेरे एक दिमाग में आ गया, और वहां से एक प्रोडक्टिव फ्यूल मैंने डेवलप कर दिया। सो रिसर्च आपके आजू बाजू में होता है, आपको ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने इस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, जिज्ञासा में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में आप कोशिश कर रहे हो, कोई नई नई खोज करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो यही चीजें आपको सिर्फ ये जिज्ञासा इवेंट तक सीमित नहीं रखनी है, बल्कि आपको पूरे लाइफ में, आपके पूरे करियर में आपको यही चीजें करती रहनी है। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स साइंटिस्ट। तो आप सभी को दिमाग में आपको ये रखना है कि सभी को साइंटिस्ट ही बनना है। किसी भी चीज में आप जाओ, आपको रिसर्च ही करना है। इसी फील्ड के साथ में आप आगे बढ़ो। और सभी पार्टिसिपेंट को मैं बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूँ, और यही घोषित करता हूँ कि आज आई एम डिक्लेयरिंग दैट एग्जीबिशन इज ओपन नाउ। सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, स्कूल ऑफ स्कॉलर, जिज्ञासा इवेंट पार्टिसिपेंट्स। और सभी अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए, और सभी को हेल्प करने के लिए आई विल बी ऑलवेज देयर, ज्ञान फाउंडेशन विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।
Thank you, sir, for your great words of motivation. We hope that your words may allow us the path to igniting minds, heart, and soul towards a sustainable world. Jigyasa has entries from all over the world, amounting to 600 plus registrations and over 200 projects were submitted. In order to do justice to these projects, there were host judges who facilitated in the shortlisting of the projects in the final round of judging. Now we request our Honourable Director, Mr. Ajinkya Ambarkhane, to throw some light over the event. Sir, if you may. Good morning, all, and I welcome you all for this event today. I would like to thank Ajinkya Kottawar ji for throwing light on his journey, because that is what we actually need today as a motivation to all the students across India and world. Before I brief about the event, I would like to thank all the judges, Dr. Jatin, Mr. Surjit Chaudhary, Mr. Ajit Bhoyer, who have been part of the entire judge forum. Also, I would like to thank Dr. Vinod, Mrs. Neha, Mrs. Kavita Nagarajan, and Mrs. Geeta Bhuramade, who had helped us shortlist the projects which we could take ahead. Now, before I actually introduce the event to you, I would like to thank the entire team Jigyasa who drove this concept to reality. Because we talking here, we are just cover of the book, but the entire team, entire pyramid of people that had sleepless nights to make this event success, we would like to congratulate you all. And moving ahead, so Jigyasa was a concept, the objective behind the concept was to help all the budding young innovators by means of giving them a platform for exposure and allow them to compete with self first and other innovators, which will ultimately lead them towards their own development and make them a sensible citizen of future. We all want to see students who could concentrate on the problems around them and think for a solution. And to make this event a success, I thank my entire top management to enable us to go ahead and conduct this event. We were awestruck by the level of projects we had received. We were hoping that once the registrations would open, there would be roughly 100, 150 or 200 registrations and projects. But we were positively surprised that we have received 600 plus registrations. So the impact that Jigyasa event has created and the impact that adult tinkering labs are creating across India is very much visible by the registration numbers itself. And with this many registrations, it came with a problem we were happy to have. So it gave us tough time to evaluate all the projects. We had to go through all the projects multiple times to identify which will go for final round and which will go for People's Choice Award. And while I brief so, please note that no project or effort put in by the students and faculties and parents who are guiding them have been rated less or more. Neither we attempted rating it good or bad. We have very high regards for all the students, staff and parents who guided students to achieve their goal towards this project by participating in an event like Jigyasa. You all have already walked an extra mile as compared to others, and we are sure you will definitely have benefit of this in future. We congratulate each and every student who was motivated to complete his project on time and showcase it on Jigyasa platform. We could see students who had used materials available at home, material available in adult tinkering labs of their school, and material they could get hold of from market. And we congratulate these students, as this is the very habit of theirs to hunt for solution is what is going to benefit them in their future. And please carry on this habit. The focus while selecting projects for final round of judgment and People's Choice Award was to identify students who have identified existing problems they wish to solve. We were looking for students who have given thought to solve the problem, and we are having complete clarity in their mind when they were explaining solutions to us
Further, those were given priority where the project or the concept was completely innovative, never heard of, or very new to us. We are sure that students might have faced problems while doing these projects. They might have gone through troubles like though they had clarity of project, but when they actually started building them, they might have not got satisfactory output, or because of the material they choose, or for n number of reasons, the project might have not worked initially. And then later they have succeeded to a certain level. But don't worry, kids, because this is how typically innovation happens. And don't think that just because you are a student and small, you are facing this problem, because no matter how old you are, all the scientists, engineers, and people working in industry go through this cycle. They think of something, they try something, they fail multiple times, and then they ultimately achieve the outcome. So just because you failed in first few attempts, don't get disheartened. And with this note, I would like to once again congratulate all the participants and wish you all the best for the competition and the entire week-long exhibition. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us for the necessary details and the guidelines on which the event is going to be going on further. So, with no further ado, let's also introduce our judges, which are going to be helping us, with the panel today. We have Dr. Jatin Bahane, a gold medalist in both International Astrophysics Championship and International Math Program Olympiad. He is the youngest physics researcher in India and youth icon of 2021. He is the scientific advisory and additional scientific secretary for Orbit X and will be launching India's first reusable launch vehicle. Apart from that, both of our next judges are a part of Plaza Consultancy Services, Mr. Surjit Chaudhary and Mr. Ajit Boyer. They have been key personnel to the Go IT program of TCS's CSR projects. Main Group of School has collaborated with the Go IT program, which empowers students to identify and develop prototype solutions to one of the tech pathways that includes building mobile apps, microcontrollers, IoTs, artificial intelligence, also known as AI, and blockchain technology to solve social problems related to the United Nations Sustainable Development Goals. Both have vast experience in the field of their own, and Mr. Surjit and Mr. Arjit have been an integral part of TCS's CSR project, which utilizes digital innovation and career readiness program in addressing global issues with design thinking and technology for 21st century skills to be inculcated in children. We now request our Honorable Director, Mrs. Abha Meghe, to kindly bless us with few words of wisdom and declare the competition open. Thank you. Today's guest, Mr. Ajinkya Kottawar, judges for today's competition, my colleague, Mr. Ajinkya Ambarkhane, teachers, and dear students. And today's special judges for this competition, Mr. Surjit and Mr. Jatin. I welcome you all on this occasion of National Science Day celebration plus Atal Tinkering Lab activity Jigyasa. We all know today is 28th February, we celebrate a National Science Day, which is the birth anniversary of C.V. Raman, and who is achieved or winner of Nobel Prize of Science for his invention, that is Raman effect, in 1930. From 1930 till date, we are waiting for a great research in India and a next Nobel Prize for India. And I'm definitely expect this from all you people, new generation and new scientists. Dear students, recently you are, whatever news you are reading in the newspaper and you are watching on the TV, what is special? The special is very threatening, very, what you can say, dangerous, that is Ukraine and Rus war. That means a world is not in peace. Every day
we are getting some type of these news. But are you feeling comfortable with these news? Are you happy with this invention or these type of activities in the world? And I definitely guaranteed that my students, all these new generation is not happy. They are not safe. They are not feeling confident to stay for a long time in any of such a situation. The students, peace and development is the highlight the significance role of science in society and the need to engage the wider public in debate on these emerging science issues. It also underlines the importance and the relevance of the science in our daily life. It is rightly said that the curiosity is the mother of invention. What is curiosity? Jigyasa. What is Jigyasa? That is a curiosity. So curiosity starts with why and it leads to how. As Mr. Ajinkya Kottavar rightly said, why? The curiosity has to be there. Why happened this? Why I cannot do this? Why these people are facing problem? The problem should be understood. There should be a problem and there should be a why question in front of you to get this type of curiosity. And this to bring out all those why and how for strengthening the public awareness of the role of science for peaceful and sustainable developed societies. Promote a national and international solidarity for shared science between the different countries. Renew national and international commitment for the use of science for the benefit of societies. Draw attention to the challenges faced by science in raising support for the scientific endeavor. These are the main aim of this Jigyasa. Because the world has become a global village. In this competition, I came to know out of that 600 registration, many are from abroad. Some are from Dubai, some are from some other countries. So, this in technological world, it's very easy to share our concept, share our thoughts, share our inventions with each other. And this is the platform which provided to you people by Making Group of School to share your ideas. Dear students, by linking the science more closely with society, Jigyasa aims to ensure that the science is kept informed for development and the sustainability in the society. It also underscores the role of scientists play in the broadening our understanding of the remarkable, fragile planet we called home, and it making our scientists more sustainable. So, with this thought, I feel this is the platform where you can share your ideas. These objectives is to bring the science closer to the society by lightening some key scientific aspects and possible solutions provided to the science, technology and innovation to some of the major global challenges society is facing today. I hope with your small efforts which you have prepared for these competition and the exhibition may help society to be in a big way, because as Mr. Ajinkya Kottavar said, your invention don't keep as a smaller level. You try to make it a prototype, try to get the patent for that,
and make it useful for the society. I appreciate the efforts of Team Jigyasa, as Ajinkya Ambarkhane said. So many people are involved in these particular Jigyasa competition. I really appreciate because they are working for day and night to make this event a successful endeavor for Meghe group of school under the Atal Tinkering Lab activity. I wish all the best for all participants, those who have given their thoughts and made a different many projects, sent their videos, and it was really good. Some of the students have created it was unbelievable that it is a students' creativity and the students' thoughts. So I wish them best. I congratulate to all the supporters, the teachers, parents, and the other member of the society who promotes the students for this competition. And with this thought, I declared this competition is open for further judgment. I welcome Mr. Surjit and Mr. Jatin because further they have to do a very big task, Hercules task, to judge a best out of so many good, because all projects are really, really very good. Thank you for listening me and all the best for endeavor for this venture. Thank you, ma'am. Your words have always been inspirational to all who hear them. Let's now start with the competition of Group B Juniors, grade 6 to 8. Few rules for the participants before we do so. Number 1, try presentators should have their camera on throughout the presentation. Number 2, try to minimize the visual and auditory disturbance, if you may. Number 3, your explanation should not exceed more than 5 minutes. My fellow colleague is going to be repeating the same rules in Hindi for better understanding. पहला, प्रतियोगी अपना कैमरा प्रदर्शन के दौरान चालू रखें। दूसरा, कृपया किसी प्रकार का शोर ना करें। तीसरा, आपका प्रदर्शन 5 मिनट के समय अंतराल से अधिक ना हो। So, moving forward to get this event started, in the junior categories we have Miss Arnavi Singham from Bharatiya Vidya Bhavan, Lloyd Vidya Niketan, Varda, Maharashtra. participants, you're on for presentation. Yours, Lily, is not allowing me to do. Can you just Connected, dear. are we audible? Yes. Yes, you are audible. Student, you are audible. Good afternoon, dignitaries and all my dear friends. I am Arnavi Singham. And I am Vedanta Pase. And we are here presenting our model titled In Traffic Emergency Service Vehicle Alarm System. The Almighty's watch and notice over us is kept by the eye of me. The COVID time has already been emphasizing the love and respect that the society has for doctors. My parents have been medical practitioners over a decade. I have seen them sometimes being very tense when a patient has been sent through an ambulance. They have been really anxious when they saw that a patient lost his or her life just by a second or minute because the ambulance couldn't reach on time. When I was stuck in traffic, I would always think of how fire engines or any other service vehicles would manage to reach on time, as its essentiality is to reach on time with the person's life or even few more sometimes. I felt anxious when motorists couldn't give way for ESVs to pass. Often motorists, as per what the traffic officials say, should give the way to ESVs, but they can't due to lack of awareness. Transportation helps in removing the distance barrier.
An efficient transport system is important for the sustainable economic development of the country and promotes national and global integration. Emergency service vehicles, or the ESVs, are vehicles operated in an effort to protect, provide, or restore public safety. Other than that, ambulances and fire engines, which are ESVs, are often called at signalized block junctions, and these cause lives of more than one person even sometimes. So, we decided to work on a model that would help the ESV to reach on its destination in time. The exhibit idea can be adapted externalizing hydraulics, which is basically machinery that works by the use of fluid moving under high pressure. Hydraulics, which is an application of Pascal's law, is used for moving parts of mechanical systems that need to be lift or push heavy objects. Hydraulics-based systems are mechanized by fluids, pump plates, typically through cylinders or moving pistons. During the course of gathering information, we found that 1 in 10 patients in India dies on the way to hospital, and that brain death can occur in 6 minutes or less in cardiac arrest when a house creates untenable situations within the same time frame. This made us totally shocked, but it also gave us the fire to steadily bring out the solution of the problem, and here is what we have done. Also, a question was arising that how can we use one of the important infrastructures of the carriageway, that is the footpath, differently? In India, height of the footpath shall be maximum 100 millimeters to 150 millimeters over the carriageway level. The width of the footpath shall not be less than 1.8 meters according to the Indian Road Congress IRC. This effectively means that the carriageway or the road is at a lower height than that of the footpath. So, as you can see, now as the ambulance is stuck in traffic, because here is the collision of two vehicles, so how can it get away and reach the destination on time? So, now as this happens, the pedestrians will be informed that the ambulance is coming with the help of a signal. As the signal starts, the footpath will slowly start gliding down. Now, the ambulance will move through the footpath and it will be away from the traffic, and hence it will be able to reach on time. And now the signal continues, the footpath comes to its default position, that is quite above from the carriageway, and simultaneously the signal stops. Here we are using the number of sets of hydraulic systems. Each system consists of 2 syringes and pipes connecting both. Here, fluid uses air. When we apply force on the piston of the syringe A, the pressure is exerted on that small area. By the Pascal's law, the same pressure is transmitted in all the directions and reaching the piston of the syringe B have more area. Force exerting on B piston will be more. With that, this is how this force can be used to lift or put down the footpath. Now he will be explaining the working of the buzzer. Yeah, the buzzer circuit has main constituent 555 timer IC. This 555 timer IC is used for oscillating of current. So we can set the oscillation to a particular speed, and the output can be taken via buzzer. We have ascended the technological value of the model by introducing the concepts of LED as street lights, which are controlled by automatic systems containing LDR, transistor, and relays. Whenever the intensity of the sunlight is decreased, the LDR senses it. This results into the decrease of resistance. This causes the BC547 transistor to close the circuit, and now the relay starts acting as a switch. Thank you. Thank you, participants, for your wonderful presentation. Now I open the participant for the question. Judges, you might want to ask them some questions to throw some light on their projects. Hello, am I audible? Yes.
So I had a question about the implementation part. Yes, Uh, sir. if talking about the existing infrastructure, how would you implement this in the nation which is so big? How are you planning for that? So how can we implement it in the nation which is progressing? This is what you have asked. Which is huge, which is huge. India is the seventh huge biggest country in this world. I'm talking Yes, about sir. that. How will you implement? So, India is a developing country. We know that the infrastructure, especially the carriageway and roadway, like every 2 kilometers or so, we can see something developing related to road. So, so basically, not very quickly, but especially where there is the plan of infrastructure, economically stable, they can start implementing the system, and then gradually it can go to all of them. Yes, it will take time because hydraulics is quite huge machinery, but then once it is installed, its advantages are very high. Once it's in fact, its maintenance is also easy if it's installed quite nice. I got my answer. Surjit, sir? Hi, good morning, students. The project was very nice. When I see a technology is involved in it, okay, a hydraulic thing is involved. Uh, I just have a thought in mind. Why can't we use solar energy so that the energy which is used can be more efficient and can be used in a different way as well? So, what are your thoughts on that? Sir, actually, during the night, we cannot use the solar energy. Yes, we have thought of advancements like while choosing which to use hydraulic, we even thought of the gear system. But then while setting out, it turned out that in the gear system, even if one gear is wrong, then it could disturb the whole system. And in the same way, while using solar power also, first of all, in night, it won't be effective. And what about rainy days? Where the chance of accident is more. If sun won't be out, so again it will create a higher confusion. Like in Bombay, the climate there is quite untenable. Correct, very good. That answers my question. Thank you. Yeah, hi. This is Ajit. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Yeah, good morning. I just wanted to have something like how you are going to implement this project in cities like Mumbai, where there is a lot of traffic. First thing. And second thing, as you told me that the Mumbai is having a lot of climatic issues like a heavy rain. So how you are going to protect your hydraulics during your rainy season? So basically, as you can see in the model also, they have given a good cover, and obviously on the larger. Sorry for the disturbance. Yeah, no issues. Actually, whenever it can be done on a higher scale, obviously pistons won't be used. There would be some better kind of cylinders, like we see in the jacks and all of uh, in car washing centers or at many places in industries, hydraulics is being used. So those kind of system will be used. So it would have a good protection system. And then, sorry, we haven't thought of it now, but we could give it a backup or something like that, and we would be up with that soon. We'll try for it. Okay, no issues. Thanks for your explanation. Thank you. Good morning, Arnavi and Vedant. So first of all, congratulations on the project, and you have done a wonderful presentation. I hope I'm audible clearly. Yes, sir. Yeah. So good work. Keep it up, and I'm sure you might have also faced some problem while making this model. So can you just brief us what problems you faced while making this? Actually, honestly, I faced a problem making the hydraulics. Actually, first I tried to use water, but actually I did so it got leaked. So then we moved on air. So now it's going smoothly. That is a wonderful experience you might have had, I'm sure. Yes.
So it is one of the problems. And again, the same question which actually arises in many people's mind that in India, in such a big country, how its application will be possible. So researching about it, collecting data about it was quite difficult, but it was also a fun job. Okay, what all materials you have used for making this? Sir, can you please specify the question? What all materials you have used while making this product? So for hydraulics, we have just used the normal syringes and pipes, connecting pipes. Okay. Yeah, and so for buzzer, we have used the 555 IC and few more components. We can show How you. much time it took for you to build this completely? So we did in a shift of 2 hours, so it took 5 to 7 days. Okay, very good work. Great job. Congratulations and keep it up. All the best. Sir, in the video, you would be able to see the components, I guess. Yes, yes, I could see the components right now. Also, you have opened the site. So it's very good work. Good job. Thank you, sir. Thank you, participants, for their wonderful presentation, and thank you, judges, for putting some clarity onto their projects given by the participants. Now, for the second competitor, we have Mr. Sayyid Bilal Sayyid Alimuddin from Shahababu Urdu High School, Hamza Plot, Akola, Maharashtra. Yes. My name is Sayyid Bilaluddin, son of. My name is. My name is Sayyid Bilaluddin, son of Sayyid Azimuddin. I belong to 8B. My school name is Shababu High School, Hamza Plot, Akola. My name is Abdul Hasim, son of Abdul Razik. I belong to 8B. My school name is Shababu High School, Hamza Plot, Akola. My model topic name is health and hygiene. My model name is water tank cleaner. You have seen that in our surrounding, all the people are used water tank in their basic purpose. Water tank is our basic need. It is very difficult to wash the water tank. So material is useful for washing the water tank. Apparatus which I used in this model: cloth washing brush, flow motor, and one steel pipe. With the help of brush and motor, we have cleaned the tank and drain the dirty water from it. If we don't clean the tank of drinking water, then we have to face many diseases. Also, it is very difficult to wash the tank. Many problems are to face the person to clean the tank. So, with the help of this model, we easily clean the water tank. We are used unnecessary objects for making this model. This model is not expensive, but we spent only 250 rupees making this model. This model is also made by each co-henry person in their home. वाटर टैंक आज के इस दौर की एक बुनियादी जरूरत में से है। वाटर टैंक आज की एक बुनियादी जरूरत में से है, जिसका इस्तेमाल हम हमारी जिंदगी के तमाम जरूरत के लिए करते हैं। इसका सबसे मुश्किल काम इस टैंक की सफाई है, जो घर के हर वक्त के लिए मुश्किल है। इसके जरिए से हम टैंक की सफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमने जो आलत ली है वो है कपड़े धोने का ब्रश, एक कुलाई की मोटर, एक स्टील का पाइप। स्टील के पाइप को हम स्टील के पाइप को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ब्रश की मदद से टैंक साफ होता है और कुला मोटर की मदद से गंदा पानी बाहर निकलता है। थैंक यू।
Okay, thank you participant for your wonderful presentation. I would ask the panel of judges to question them for further inquiries. Yes. Hi students, good afternoon. So student, मेरा पहला question ये रहेगा आपसे. So you have made a water cleaner which is very nice and very cost effective. Can you tell me what is an alternative right now which is going on in the market? That is the first question. Okay. Secondly, do you think, I mean, since I see this is a very cost effective and can be made very easily, so how do you think that this product can be patented and no other company can make it? I mean, how do you see your competitors not making this product? So that's my second question. So मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सस्ता है आपका ये राइट प्रोडक्ट, मैं इसको घर पे भी बना सकता हूँ, तो आप कैसे देखते हो कि कोई और कॉम्पिटिटर इसको नहीं बना पाएगा? दैट इज माय फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अभी फिलहाल मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टैंक क्लीनिंग के काम में आते हैं, तो वो क्या हैं? व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स? ये स्टैंड चेंज है सर, ये इजीली हो सकता है. ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, हमने इसे घर पर बहुत सस्ते में बनाया है. ओके, ठीक है. और फिलहाल जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट में वो किस तरह के हैं? कुछ आइडिया दे सकते हो आप, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं? वो प्लास्टिक सर, वो प्लास्टिक के रहते हैं. ओके, ठीक है. ऑलराइट, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून. मुझे एक ही सवाल पूछना है. यू आर यूजिंग, आप उसमें कुछ डिटर्जेंट यूज करने वाले हो? If you are saying yes, then how you are going to ensure that the tank is free from that detergent? Yes sir. Yes sir. तो आप ensure कैसे करोगे कि ये टैंक में कोई रेसिड्यू रहेगा नहीं? हम इससे क्लीन करेंगे ना. ओके ओके. और ये जो आपका जो डिवाइस है ये सारे साइड्स आपकी क्लीन करेगा टैंक की ऊपर से नीचे तक, राइट? Yes sir. Okay, even the curvatures. Yes sir. Okay, thank you. Thank you. गुड मॉर्निंग बेटा. आप लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढा होगा तो आपने क्या पढ़ा? टैंक में जो नीचे गंदगी जमा रहती है वो किस किस टाइप की गंदगी रहती है, नंबर 1. क्या सिर्फ ब्रश से स्क्रबिंग करने से आपका टैंक क्लीन हो जाएगा क्या? तो ये दो चीजों को लेके आपने क्या काम किया, आप थोड़ा बताइए. सर अलगी और फंजाई जैसे बैक्टीरिया सर इसमें रहते हैं ना. ओके. और सिर्फ ब्रश के इस्तेमाल से साफ हो जाएगा? से क्लीन करेंगे. ओके, ठीक है बेटा. थैंक यू. थैंक यू. मेरा एक क्वेश्चन था कि ये कितना ड्यूरेबल होगा? जैसे इफ आई टॉक अबाउट कोई भी चीजें हम जब यूज करते हैं वॉशिंग में, तो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हमें उसे रिप्लेस करना होता है विद समथिंग न्यू. तो ये कितने समय तक चल पाएगा आपका जो प्रोडक्ट है? सर 1 साल चल सकता है आराम से. 1 ईयर. और कितने बार आपको टैंक साफ करने की जरूरत पड़ती है 1 महीने में? सर 1 मंथ में पड़ती है. हर महीने में 1 बार? यस सर. ठीक है. Thank you, participants. Thank you, judges, for throwing some light over our projects. I hope the questions from the judges asked
the project, a little bit more simplified and clarified. Let's go to the next contestant. That is Ms. Mir Anusha Iqbal from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Aglar, Shopian, Jammu and Kashmir. Good afternoon, everyone. This is me, Mirarusha Iqbal from class 8th. I'm a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Aglar Shopian. Today I am here with my project that's based on healthcare, and the title of my project is Self-Sanitizing Door Handle. As we all are aware about the fact that we are passing very tough times as a major global pandemic has hit the earth so badly that prevention is the only cure, or we can say prevention is better than cure. We all are aware about the fact that the government of India has banned the contact with the foreign objects just only to minimize the spread of virus, and also the public gatherings has been suspended to stop the virus, and self-distancing, this cleanness and sanitization has become the utmost important. But the thing is that comes in contact with many people, those things that comes in contact with many people needs to disinfect regularly. And I propose my model to be as self-sanitizing door handle, because I think this is the thing that comes in contact with many people and it's very difficult to avoid. And this model adds to our ability to counteract, or we can say to stop the virus by making this one self-extremely object, by making this object self-sanitizing. Let's come to the model. Here you can see there are two types of handles. This one is a new type of door handle equipped with a hydraulic system for self-sanitizing. You can see when this plywood is actually acting as a door. When I just open the door, the sanitizer from this tank is carried by this piping system, and it's carried out, and you can see here the hands, the user's hands, and also the handle got disinfected. मतलब ये नेचुरल थिंग है कि जब हमें बाहर निकलना होता है या अंदर आना होता है तो पहली चीज है कि हमें पहले दरवाजा ओपन करना होता है, तो बाहर निकलते समय या आते समय हमें पता नहीं कि जो ये डोर हैंडल है इसको कितने पर्सन्स ने टच किया, तो हमें ये भी नहीं पता कि वेदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड और वेदर द पर्सन इज हेल्दी। तो उसके लिए जो ये डोर हैंडल है या जो ये हैंडल है ये कैरियर बन सकता है एज कैरियर ऑफ वायरस, तो इसको हमें डिसइंफेक्ट करना है। तो इसके लिए जब हम दरवाजा खुलाएंगे तो हमें इसको जो पुश करना है, जब हम दरवाजा खुलाएंगे तो बेसिकली जो ये सैनिटाइजर है ये ऊपर आएगा और जो ये क्लोजिंग स्ट्रोक है इससे सैनिटाइजर बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सैनिटाइजर जो निकला तो इससे यूजर के हैंड्स भी डिसइंफेक्ट हो गए और जो हैंडल है ये भी डिसइंफेक्ट हो गई। तो अब अगर कोई पर्सन चाहता है कि he or she wants to implement this handle in her or his construction, तो उसके लिए अगर वो सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर, तो उसके लिए अगर वो ये हैंडल्स यूज करना चाहते हैं तो दैट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। लेकिन अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी 1 year ago या 2 year ago अपना जो कंस्ट्रक्शन बनाया है, लेकिन अब वो कैसे रिप्लेस करेगा अपनी सारी हैंडल्स, तो उसके लिए लेट्स कम टू दिस टाइप ऑफ हैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हियर इट्स एन सिंपल एंड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डोर हैंडल दैट वी कैन सी इन आवर हाउसेस, स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस। तो इसमें मैंने क्या लगाया है, हियर आई हैव अटैच्ड अ मैकेनिकल सिस्टम that produces the force, and when this spray bottle stop is pressed by this force, the sanitizer with this help of dissociation system, the sanitizer, or we can say the spray sanitizer comes out. Let's see. You can see the sanitizer is coming from out of this bottle, and this model is very easy if we can implement it at industrial level. Thank you and have a nice day.
Participants for your wonderful presentation. Now I would like to open the panel of judges to ask the participants some questions for the project to get a little bit more clarity. It's a great project. Can I ask इन दोनों की values क्या है? कितने आपको कितना expenditure आया था इसको दोनों को बनाने के लिए? सर मुझे जो इन दोनों को बनाने के लिए सर मुझे बहुत सारा मतलब सर not too much but sir I used like the pen bodies. I used the waste material to get best out of the waste. Sir, these things were not easily available in the market as I made it in the pandemic times, and there was lockdown or the markets for shops were closed. So sir, I made it like the refilling, like the pen body, used pen bodies or the walls, or you can see in this model as I showed. Okay, but if I just want to install it at my house, कितना expenditure आएगा around? That is the Sir, you have to install it at an industrial level. It is very easy to implement, sir. It does not cost for too much as it's for sanitization purpose, and it like we use a lot of it costs a lot for the sanitization of our house and for the medicines or for, but sir, sanitization is important and it will not cost too much at an industrial level if we can implement. Okay, that answers. Okay. Hello, Arusha. Great work. And thank you. Keep it up. And I would like to ask one question is this the first version of your idea, or you faced any difficulty arriving at this version of your project? Sir, while making this project, I faced a lot of difficulties. Like, this idea came into my mind that let's make something different and new. But sir, like these walls are present that ensures one-way transport system. I was not aware of the principles like hydraulics, etc. So I have to go through about this first, and so many times it failed. My attempts failed, but at last I made it, and it worked very well. Okay, thank you. Hi, good afternoon. So I kind of liked your project very much because that's a need of an hour right now because we all are passing through a pandemic. So that's a very good experiment and I like it. The first product which you have made, that is the new handle which somebody gonna install, that is very nice. I mean, but it has a free space to handle and everything. But if I move on to the next version of it, which you have made, wherein the handles are already installed, I think when I catch hold that handle, there'll be too much of difficulty in it. Don't you think that? I mean, if you look at the project, what are your views on your second handle? Is it feasible enough to handle it? Sir, while making the first handle, I thought that if somebody implemented it, then if somebody is in need of this sanitization purpose for the handles, then he or she must not be replaced. Here, there is a limitation that sir, उनको फिर सारी अपनी जो constructions की handles है वो replace करनी है. So keeping this point in view, I catch this and I made this simple mechanical system, sir. But I think while you can see here, while just at an industrial level, it can be very good. Like when we push this, the sanitizer spray is coming from this dissociator. Okay. और आपके हिसाब से कितना cost आ जाएगा if I want to install it? A rough idea. Sir, if you want to install it, That's sir, right. if you want to install it, sir, I have not the idea, but I think if you want to install it, that the cost will be not too much. At an industrial level, if we can made it, it will not cost too much. As shown here, it's very large in size. It can be made into into a small size if implemented.
And moreover, sir, it can be used in this idea can be used in the handles of not only door handles, but in the handles of cars, buses. That's most important. Okay. Thank you so much. That answers my question. Hi, am I audible? Yes, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Your project was so nice. It's it's a need of an hour. But I just wanted to know कि ये जो आपका जो जिसमें ये sanitizer आप use करने वाले हो, this will be a water based or it's a glycol based, because glycol based जो sanitizers होते हैं उनकी viscosity थोड़ी ज्यादा होती है. तो which kind of an like sanitizer you are going to use? Sir, in the first handle, I have used this liquid sanitizer, but in the second handle, I have used the spray sanitizer. Okay, और ये आपको भी पता होगा कि ये जो सैनिटाइजर्स है, दे आर इन्फ्लेमेबल, जलते हैं जल्दी से. तो हाउ यू आर गोइंग टू लाइक, अगर हम लोग ये घर में कहीं कर रहे हैं, कहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू अवॉइड द लाइक कोई कुछ उसके लिए इन्फ्लेमेबल कुछ हो ना जाए, इसके लिए हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट? Sir, for that purpose, there is a support for sanitizer bottle or something, sir. Everybody knows that there is a name titled on the bottle sanitizer that they should. Okay, no problem. Thanks for your update, and it was a very wonderful project. Thank you. Thank you. Thank you, participants, for your wonderful and innovative projects. And thank you for the judges to ask the questions to clarify it out. Now we shall move along to the next participants. We have Master Om Praveen Vihare from Rajeshwar Union High School, Bandera, Amravati, Maharashtra. you turn on your cam and present your project in front of the judges. Hello, my name is Om Praveen. I am from Rajeshwar Union High School, Patna. My project name is aquaponic farming. We can understand this small model. What is aquaponic? How does it work, etc. Aquaponic is a gardening method that utilizes the symbiotic relationship between fish and plants. Simple code: aquaponic is the combination of aquaculture, means raising fish, and hydroponics, means plant grow in the water. Let's me tell you why this method is important for the future. According to UN reports, the population of the world will increase to 970 crore within 2050, and amongst that 170 crore will be in India. Population will increase, but the lands will remain the same. We have no include. What is the weather will be like? So it will be the best to adapt this kind of farming. Let me now tell you how aquaponic farming begins done. Suppose this is the water tank and this is the land water tub. Suppose in this water tank, in water of the fish tanks becomes rich ammonia with the fish waste, and this water is supplied to the pipes in the plant water tank. After plant have the nutrients, then water is again sent back in the fish tank. This is called aquaponic farming. Advantage of the aquaponic farming. Firstly, in this method of the less water is used to 90% than traditional farming. And this farming is chemical free farming. This is farming technology where farmers don't have is dependent on monsoon. Water is safe and production rates will increase 90 to 30 to 40%. Thank you.
Hello, Praveen. Om Mehra. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So nice presentation. What I would like to ask is, if an individual wants to do it at home, so what are your ideas? Is it feasible for everyone to have a small hydroponic, aquaponic farming at home, and how one should approach, or rather, what is your approach and a typical cost for someone? Sir, please tell Hindi. Sorry. हम आपको सवाल समझा कि मैं जो पूछा? हेलो. 1 मिनट सर. सर एक बार फिर से दोहराइए. आपका जो ये एक्वा फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को अपने घर पे करना होगा तो क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितना खर्चा आएगा? उसके लिए वो घर पर कर सकता है. उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके लिए हमें सिर्फ एक वाटर टैंक लगेगा और फिश लगेंगी उसमें. वो अभी एक मॉडल तैयार करने के बाद वो अभी हम मतलब मोटर के जरिए उस पानी को अपन ऊपर से लेके वो कर सकते हैं. इट्स पॉसिबल इन आवर होम. और अगर एक 4 लोगों की फैमिली को सेल्फ सस्टेनिंग मोड में करना होगा तो कितना बड़ा सेटअप लगेगा? आपने कुछ कैलकुलेट किया है? हाँ, उसका कैलकुलेशन ना मतलब मेरा एक एकड़ का कैलकुलेशन है. छोटा कैलकुलेशन किया नहीं इसलिए. ओके बेटा, थैंक यू. Hi, am I audible? Yes, sir. My question to you is कि ये हम commercial use कर सकते हैं क्या? That means तुमने अभी वही छोटा scale में कर दिया है. Can we use it on a commercial basis? मतलब अभी जैसे लोग normally खेती करते हैं, जैसे with that we can do it. This is the first question. And second question is that कि how you are going to implement this project in a droughted area जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है. So whether that is applicable in that particular regions? Yes, sir. वैसे हम इसको कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं. और जहाँ पर सूखा पड़ता है, मतलब कौन सा प्रगतिशील देश होगा जैसे इजराइल है, वहां पर भी ये टेक्निक यूज की जाती है. जहाँ पर लोग ज्यादा है और वहां पर जमीन कम है, यह जगह पर ये कमर्शियल लेवल पे हम यूज कर सकते हैं. I had this question कि अगर मान के चलिए वो पानी में अगर कुछ खराब चीज आ गई, जैसे हो सकता है कोई फिश को कोई बीमारी हो गई या कुछ और गंदगी आ गई, और वो पानी फिर वापस से प्लांट्स में जा रहा है, वो उसको इन्फेक्ट करेगा, तो इसके लिए अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने सोचा है? यस, इसके लिए अपन बायोफिल्टर बिठा रहे हैं उस पर. ओके. Hi, good afternoon. So, aquaponic is a very good concept. Right now, it is already in place. कुछ कंट्री में ये ऑलरेडी तकनीक यूज हो रही है, और मैंने तो YouTube पे ये देखा भी है कि इंडिया में भी लोगों ने इसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया है. यस सर. सो व्हाट इज I mean, आपको ऐसी क्या चीज लगी which is new into this? Because this is already in place, right? लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है. हमारे इंडिया में भी मैंने काफी जगह पे देखा, फार्मर्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे. इनफैक्ट इसका भी एडवांस वर्जन है जहाँ पे उन्होंने मुर्गियां भी पाली है. उसका जो वेस्ट है दे पुट इन द वाटर, फिर वो वाटर को प्लांट्स में दे रहे हैं, प्लांट्स में फिर उन्होंने फिश भी उगाई है. तो ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमारे देश में चल रहा है. So though you have invented it, it is very nice, and you have done a setup in a very small scale. But what is the need? What is new in your project? Because sir, जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में एक्वापॉनिक मतलब क्या होता है इसके बारे में किसी को नहीं पता. इसलिए मैंने ये जानकारी के लिए प्रोजेक्ट लाया है सबके सामने, और आगे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रोजेक्ट यूज करें, अपने फार्म में इसको बिठाए, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट आगे लाया. Very good. So you have brought it as an educational purpose. That is very nice. So very good project.
Thank you. Thank you to the participant for the presentation, and thank you to the judges to bring some light upon the projects. It was a wonderful one. So now we move on to the last entry of the junior category, and that is Master Anurag Vinod Chauhan from Podar International School, Amravati, Maharashtra. I request the participant to come along and turn the camera on and have a presentation going. Hello. Yes. Are they audible, sir? Yes, they are audible. Yes, they are audible. Yes. Hello, respected judges and Jigyasa team. I am Nirmal Khade from the International School, Amravati, Maharashtra. Hello, I am Vinod Chauhan, studying in grade 7 for Buddha International School. As per Jigyasa, guidelines, we have chosen Smart Mobility theme. Our project is categorized into 6 main dimensions: technology, governance, resources, village service, living, and transport. Under technology and resources, we have installed windmill, biogas, and solar panel. You know, village people always face electricity issues, and cost of CNG gases increases day by day. So windmills, solar panel, and biogas are better option. And biogas also helps to reduce global warming. We have also made folk pits to manage liquid waste management, farm pumping. Excuse me, ma'am, आपका both the devices are on. एक में आप please mute करिए because we have an echo over there. Okay, just wait. Is it okay, ma'am? Are they audible? Yeah. Other dimensions are resources and village service. In village services, we have a hospital with ambulance service. And in government service, include Gram Panchayat, e-learning center, bank, post office, and school. Under school and Anganwadi, we have installed CCTV and digitalized. Yes. Then we have made one more innovative concept, that is e-kiosk, where farmer can get daily market rates for production and weather forecasting. Living and transport include Krishi Seva Kendra for farmers, library, and all. Then we have made geo-mapping public toilet that help travelers to get toilet facility. CCTV and sensor for farm is to overcome robbery and wild animals. For convenient and safe transport, village have good cement road and street light. This is our project of Smart Village. The first president of Podar International Trust, Rashtrapita Mahatma Gandhi, always said, "The future of India lies in its village." Thank you very much. Now I would like to invite the judges to ask the questions to the project. Yes. Yeah, hi. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah, your project was very awesome. You have included everything: the wind energy, solar energy, biogas, everything. But in reality, how you are going to implement this? I hope you are aware that India is the largest country and we are having almost 5 lakh and above villages. So how you are going to implement this smart village project in India? Sir, हमारे पास मीन्स विलेज डेवलपमेंट कमेटी है, जिससे सर हम पैसे रेज कर सकते हैं और उससे मीन्स उस पैसे से ही हम सारे विलेज में वो इम्प्लीमेंट करें. Okay, thank you. Anurag and Rudra Pratap. So first of all, very good work, keep it up. And second, on the lines of what Mr. Rajit also said, so you have done a good job, but you have clubbed too many good concepts.
we could see a kiosk for farmers, we could see windmill, we could see solar energy, and we could see good infra at the village level. So let's say if you have done your groundwork right, and if consider that you become the authority in future, so what according to you should be the sequence of implementation? आप सब कुछ तो एक साथ नहीं implement करोगे. Windmills भी तभी लग रही है, infra भी पूरा तभी बन रहा है, solar भी तभी लग रहा है. So according to you, logically और technically क्या पहले होना चाहिए और किस sequence में होना चाहिए, आप थोड़ा बताइए. सर सबसे पहले हमें विंडमिल लगाना है और बाद में हम बायोगैस लगाएंगे और बाद में सोलर पैनल. यही sequence क्यों? Because sir, because of money. इसके फाइनेंशियल तो ठीक है, और टेक्निकली यही सीक्वेंस क्यों मेंटेन करना चाहोगे आप? पहले बायोगैस प्लांट क्यों नहीं और पहले विंडमिल क्यों? सर विंडमिल से सर इलेक्ट्रिसिटी पूरे गांव में जाएगी, इसलिए मींस वो हेल्पफुल होगा गांव के लिए. बाद में सोलर पैनल धीरे धीरे करके और बायोगैस भी हेल्प करेगा. Ajinkya sir, are you done so that I can ask them a question? Yeah, please go ahead. Thank you. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Okay. आपने स्मार्ट विलेज का एक मॉडल बनाया है, okay, which has lot of very good things in it, which is very beneficial for the entire village. ये बहुत कामगार चीजें हैं. Solar, wind energy and biogas, these are actually very good things which a village need to have. और ये बहुत ऊर्जा प्रकट करने वाली चीजें हैं, to tell you very frankly. तो ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट बना दिया, बट डू यू नो एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पैसा फंड करती है ऑलरेडी या कर सकती है? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट? सिंस ऑल द जजेस टोल्ड द सेम थिंग, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, डू वी हैव एनी एनजीओ और एनी कॉर्पोरेट हु कैन डू इट और हु इज ऑलरेडी डूइंग इट? कोई ऐसा आइडिया है या आपके हिसाब से कितना बजट लग जाएगा फॉर दिस एंटायर विलेज? For sir windmill, 80,000 will be there for each windmill. And there is VDC, Village Development Committee, which will raise the fund and they will means done. Okay. All right. Okay. Thank you. So my question was, have you statistically get values कि आपको windmill से village में transfer करने के लिए ज़्यादा cheap पड़ेगा या जो electricity आती है via cables वो ज़्यादा cheap पड़ेगी जो government provide करती है? Do you have that values? और अगर है तो उसका क्या ratio है? If you can tell us that. Yes sir, means ज़्यादा means ये नहीं लगेगा क्योंकि हमें मीन्स एकदम कम बजट में मीन्स करना होगा ये, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है. That is not what I am asking. मैं ये कह रहा हूँ जैसे for instance आप windmill कह रहे कि 60,000 में आप डेवलप कर लेंगे, और बाकी मिला कि भी you'll have some certain amount, फिर अब वो आप पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो इसका ज्यादा खर्चा आएगा या आप इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट आपको वाया केबल्स देती है वो ज्यादा सस्ती होगी अगर उसका आपके पास दोनों का वैल्यूज होगा? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. नो सर, मींस इलेक्ट्रिसिटी का मींस ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे. ओके ओके, आई गेस देयर इज लैकिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आप एक बार वो भी एनालाइज करिए बिकॉज हर गांव को शायद उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है जितनी आप प्रोवाइड कर देंगे. तो आपको वो भी क्लासिफिकेशन रखना पड़ेगा कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विलेजेस जहाँ किस कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कहीं नहीं है, कम है. तो उस हिसाब से ऑल्सो यू कैन डेवलप अ 3 टायर मॉड्यूल कि आप कहाँ कितना प्रोवाइड कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो लुक एट इट. दैट इज ऑल फ्रॉम माय. Thank you, participants, for your wonderful presentation. And as Najib said,
It was really incisive. Let's just move on with the senior category. Now, the demonstration by the senior group contestants, grade 9 to grade 10. We have the first one. Mr. Umesh Bharatwaj from JNB Dongargarh, Chhattisgarh. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. My name is Umesh Bharadwaj from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dongargarh, Chhattisgarh. And my name is Mayank Tandon. I am also from JNB Dongargarh. Sir, we have made a project on smart mobility. We have made a military helping truck through the use of Bluetooth and UI functions. Sir, we will see. Sir, it is our truck, sir. We have used EVIVE and Arduino such functions and motors, and we have attached a sensor in front. Control with with Bluetooth. We have connected the Bluetooth in the Arduino. We have controlled it with app name is Double App, sir. Sir, it is a remote controller for me. So Double App, when we open it, we have shown some functions. We have to choose gamepad. If we choose gamepad, the gamepad will open, sir. Then we will able to connect Bluetooth. After the connecting of Bluetooth, we are seeing that our vehicle will rotate, turn. It takes. So we have made for the sir. इसको इसलिए बनाया गया सर क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक जब जंग में जाते हैं उस समय सर अगर उनको चोट लग जाती है और उनको मेडिकल सुविधाओं की जरूरत होती है तो सर हम यहाँ से अगर कोई व्हीकल भेजते हैं तो सर एक खतरा रहता है जो जा रहा है सर, तो उस खतरे को कम करने के लिए हमने ये व्हीकल बनाया है सर। इस व्हीकल में सर आप एक सेफ जगह से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। इसमें सर एक जीपीएस ट्रैकर लगाए हैं सर नीचे में विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो, एंड सर आगे में लगा है रडार सिस्टम सर। सर हम स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए ही बनाए हैं सर, ताकि हमारे जो मिलिट्री में हमारे भारत देश में कभी युद्ध होता है तो इसमें हमें बहुत सहायक प्रदान कर सकते हैं सर। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आगे बढ़ाने का प्रदान करें। थैंक यू सर। Now I would like to invite the judges to ask the questions over to the project to basically give us more clarity over the project. Good afternoon, Mayank and Umesh. Am I audible? So, Umesh, Mayank, मुझे एक चीज समझाइए, आपका इनोवेशन बहुत अच्छा है, I liked it. बट जब आप इसको बोलते हैं कि आप इसको रिमोट कंट्रोल से कर सकते हो ऑपरेट, सो आर यू सेइंग कि जब कोई जख्मी हो जाता है तो आप मेडिसिन इसके थ्रू उन तक पहुंचाओगे? यस सर, यस सर। ओके, सो इट विल बी, तो ये मॉडल तो बहुत छोटा सा है, तो ये कितना बड़ा आप बना सकते हो और आपकी रेंज कितनी रहेगी? When you say that there should be a range, right? ये 2 किलोमीटर तक की रेंज में आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, या कितनी रेंज, आप क्या रेंज तय कर रहे हो? और ये बड़ा मॉडल रहेगा या ये छोटा सा ही मॉडल रहेगा जो किसी को दिख ना पाए? सर ये एक बड़ा मॉडल रहेगा सर। इसको एक सर एम्बुलेंस की तरह हम बना सकते हैं सर। इसमें सर अगर जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं अगर उनको छोटी सी चोट लगी है, ज्यादा इंजर्ड नहीं है, तो इसमें हम सर इस पे दो मॉडल बनाने की सोच रहे हैं सर, एक बड़े लेवल पे एक छोटे लेवल पे। तो जो छोटा मॉडल रहेगा सर वो उनको मेडिसिन दे सकता है, लेकिन सर अगर ज्यादा चोट लगी है सर तो उसको हम बड़े लेवल पे बना सकते हैं जो कि उनको सेफली बेस कैंप तक ला सकता है सर विद द यूज ऑफ ब्लूटूथ सर। तो इसका ऑल्टरनेटिव अभी फिलहाल क्या है? अभी फिलहाल भी तो एम्बुलेंस जा रही है और इन्हें ले आ रही है, तो व्हाट इज द नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट? सर जब वॉर होती है सर तो जो ड्राइवर है सर और जो स्टाफ है मेडिकल के, उनको भी सर एक खतरा रहता है, तो उस खतरे को कम कर सकता है सर।
So you mean to say आप एक driverless vehicle बनाने की कोशिश कर रहे हो? Yes sir. In easy words. Okay. Yes sir. ठीक है। और इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? Any estimates? सर अगर इसको बड़े लेवल पे देखें सर तो ये फोर व्हील व्हीकल है सर, तो अराउंड 17 लाख सर, 17 या 15 लाख सर। Okay. Thank you. Defense is पहली बात, it's really great you are working something for, you're making something for the army. But I had a question कि आप एक vehicle बना रहे हैं which is similar to an ambulance. Yes, but sir. we are talking about war. So हो सकता है वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा severely injured हो और उनको Yes, sir. immediate actions की immediate medical help की जरूरत हो। Yes, सिर्फ आप किसी को सेंड कर रहे हैं, वो बूट कैंप तक वापस ला रहे, तो दैट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, जिसमें वो हो सकता है कि वो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़े। दैट इज वाई हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर हो या कोई नर्स हो जो इमीडिएट एक्शन ले पाए। अगर हम इस ऑटोमेटेड व्हीकल में हम अगर नर्सेस या डॉक्टर्स प्लांट कर रहे हैं तो वो तो इक्वल रिस्क हो गया, बिकॉज Yes, वैसे भी हम एक साथ में सिर्फ एक ड्राइवर ही भेज रहे थे। Yes, So as a person, in defense, मैं अगर सोचूं कि एम्बुलेंस है ये बेहतर क्यों है, so I can't find that particular point कि हाँ ये एक चीज है। If you can throw some light on that. सर इसमें सर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स रख सकते हैं सर, ताकि जब तक आप सोल्जर को वापस बेस कैंप तक ला रहे हैं सर, उस दौरान सर मेडिकल इक्विपमेंट जब तक रहेंगे सर तब तक वो सेफ रह सकते हैं सर इसके अंदर। सर ये तो क्या अंदर कोई होगा जो उन्हें हेल्प करेगा इस चीज? सर ये रफ एंड टफ व्हीकल बनाएंगे सर हम, इसमें मतलब हम उबड़ खाबड़ रास्ते है उसमें भी चला सकते हैं, और इसमें हम सर एक बोट का फंक्शन देना चाहते हैं जिससे हम इसको पानी में भी चला सकते हैं, ताकि लाइक एम्फीबियन सर। I get your point, but अंदर कोई रहेगा जो उन्हें हेल्प करे मेडिकली? सर इक्विपमेंट्स रहेंगे सर जो कि ऑटोमेटिक, सर अगर आप सोल्जर को एक सेफ सर इसमें एक पोजीशन बनाएंगे सर जिसमें कि सोल्जर जिसकी इंजर्ड है वहां पर आप ऑल इन दे के सर अगर कुछ है तो आप कर सकते हो सर। Okay. That's all from me. सर एक एम्फीबियन ट्रक है सर जिसमें हम सर इसको दो प्रकार से बनाना चाहते हैं सर। बीच में अगर कुछ रिवर है सर, तालाब है सर, तो उसमें सर रुक सकता है अपना जो गाड़ी है, लेकिन इस तरह एम्फीबियन होने के कारण आप पानी में भी जा सकते हैं सर, और एक टफ व्हीकल है सर, रफ एंड टफ व्हीकल है, तो आप इसको सिंपल भी यूज कर सकते हैं। Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. I just wanted to have one question. Rather than having a vehicle which will be traveling, जो रास्ते पे भी चल सकता है या पानी में भी चलता है, why don't we design an aeroplane, a pilotless aeroplane? Don't you think that will be a feasible thing? और जो सबसे easiest way of mode of communication like travel होगा, जो base camp से base camp तक पहुंचाने के लिए सबसे जल्दी पहुंचा देगा। Yes, sir. We have an idea for this, but we have not some equipments for this. Sir, we have add a drone on this, but it सर ये कैपेबल नहीं सर इसको उठाने के लिए सर, तो अगर हमारे पास अच्छे तकनीक है सर तो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। Okay, okay, thank you, thank you. Thank you, sir. Mr. Mayank Ramesh. Yes, sir. Yes, sir. Good job, keep it up. I have a couple of questions. आप हमको पहले ये बताइए कि आपने एक existing concept लिया है and you have used equipment available in adult tinkering lab. I hope your school is having that based on I'm judging that. And you have multiple ideas for your project. तो क्या आप लोगों ने कुछ prioritize किया है क्या? Because I mean you are answering because we are asking, ऐसा मत कर। What you have built is a base concept, very nicely built, and we agree to that. But what are your priorities? आप क्या करना चाहोगे इसके full scale model में, और उसका uniqueness क्या है? आप बोल रहे हो Bluetooth. Bluetooth has a limited range of maximum 100 feet. तो अगर आप इसको war में use कर रहे हो, your war control room is multiple kilometers away. So what are your thoughts?
जो प्रायोरिटीज आप हमें टेबल पे दे रहे हो, तो आपने उसके पीछे कुछ सोचा है क्या? वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। सर अभी तो सर इसमें एक ब्लूटूथ चिप की वजह से सर अभी चल रहा है सर, क्योंकि एक मॉडल है सर, लेकिन अगर आप इसको बड़े स्केल पे बनाएंगे तो सर इसमें आप दूसरे चिप्स डाल सकते हैं सर, और एक और इस पे कर सकते हैं सर, एक प्रोग्राम्ड व्हीकल है सर, इसको आप सिचुएशन के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं सर। तो आपको जिस लोकेशन पे जाना है तो आप सेफली इसको प्रोग्राम कर सकते हैं सर। अगर बीच में अगर कोई परेशानी आती है, इसको ऑल इन कंट्रोल करने के लिए सर, अगर आप भविष्य में कोई एडवांस चिप आ जाएगा तो उसका यूज कर सकते हैं सर इसमें। सर तो और एक एम्फीबियन है, तो सर अगर बीच में कोई रिवर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है सर इसको। अभी आपका जो डिवाइस है दैट इज नॉट एम्फीबियन ना, अभी तो इसको तो इट विल गो बैड। So have you thought of any design? Have you prepared any design? What you are projecting? Yes, What sir. beta? Sir, 1 minute, sir. सर वी कैन यूज सर एक वैक्यूम पाइप, सर एक वैक्यूम पाइप जैसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं सर, जो कि इस मॉडल के सर आइट साइड पे लगाएंगे। जब कोई वाटर सेंसर रहेगा सर, जब कोई वाटर रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा सर, और इसके कारण सर इसमें अगर आप मोटर जेट लगाते हैं जो कि पानी में चल सके, तो सर ये पानी में चलने के लायक रहेगा सर। ये एक डिजाइन है सर। What class you are in? Man can mesh. 11th क्लास सर। Okay, thank you. थैंक यू। Thank you, participant. That was a great project and a really good, and it might be actually be a really good addition to the army. Now, before we move on in the event, I have two short notes before we move on. Number one is that the participants who have already done the presentation in the juniors category can leave the meeting and join us through our website portal, mgs.nagpur.org, and watch the rest of the event from the live stream. And the second note is that please do not leave the event in the middle of your explanation. Please do that. And the third one is that on 5th March, 12:30 p.m. IST, we're going to be announcing the results on our website. The same is going to be repeated in Hindi by my colleague. जिन प्रतियोगी ने अपना प्रदर्शन प्रदर्शित कर दिया है, वे यह मीटिंग लीव करके हमें हमारे वेबसाइट पोर्टल से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, प्रतियोगिता के परिणाम हमारे वेबसाइट पर 5 मार्च को प्रसारित किए जाएंगे। Okay, so now we move on to the events, and the second participant we have the video, and we would request the judges to watch the video and then question them on the video presentation. माझं नाव संदेश भीमचरण सरदार, मी 9वा अ मध्ये शिकतो। माझ्या शाळेचं नाव निर्मला विद्यालय कापूसतळी। माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे वायरलेस स्विच। हे अशा प्रकारे काम करते, आता शेतकऱ्यांना पाण्याची मोटर चालू करायची असते शेतीची, त्यांना कोणत्या वेळेस पण जावं लागते शेतीत मोटर बंद करायला चालू करायला। आता कोणत्या वेळेस जाता येत ना, तर मी असं वायरलेस स्विच बनवलेलं आहे की त्यांनी आपण एका कॉलवरून बंद चालू करू। आपण एक कॉलच्या माध्यमातून कोणताही डिव्हाइस ऑन आणि ऑफ करू शकतो। हे बघा, The video has already been completed and the presentation has been seen. I would like the judges to ask Sandesh the question, who is the presenter and presenting the meeting at the moment. Students. हाँ सर।
आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। सो आप बोल रहे हो मुझे कोई भी डिवाइस स्विच ऑन और ऑफ कर सकता हूँ एक कॉल करके, राइट? ठीक, हाँ सर। ओके। तो आपका ये जो ऑन एंड ऑफ की जो प्रक्रिया है वो एक कॉल के जरिए हो रही है। मुझे ये पूछना है, अगर आधी रात को मुझे कोई मोटर जो मैंने रात को खेतों में चला रखी है पानी के लिए, ठीक है, हाँ। मैं कॉल कर रहा हूं बट मेरा नेटवर्क नहीं है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, उस केस में इसका बैकअप प्लान क्या होगा? क्या जरिया होगा कि मैं मोटर को बंद कर सकता हूँ? सर आपको तो नेटवर्क इशू आएगा तो एक ही तरीका होगा, आपको खेत में जाना होगा और मोटर बंद करनी होगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। अगेन मेरा क्वेश्चन सिमिलर है कि व्हाट इफ जैसे खेतों में जैसे नेटवर्क का इशू आ गया या कोई टेक्निकल इशू आ गया, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या करेंगे? और ऑल्सो व्हाट अबाउट जो चीज वहां रखी है, अबाउट इट्स चार्जिंग एंड थिंग, आप उसको चार्ज कैसे करेंगे? मतलब फिजिकली जाके आप चार्ज करने वाले, या उसके लिए कुछ सोलर या कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे आप वहीं पे? सर उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम आया तो हम उस पे एंटीना भी लगा सकते हैं। संदेश, ये आपको बनाने को कितना खर्चा आया? सर मेरे को पूरा टोटली खर्चा 300 रुपए है। अगर मान लो आप जीत गए या आपको सीड मनी मिला, तो आप इसका फुल स्केल मॉडल बनाने के बारे में सोचा है क्या? हाँ। तो इम्प्लीमेंट करने वाले हो, कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे पहले? सर आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। आप इसको जब फुल स्केल मॉडल बनाओगे तो हाँ? इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे सबसे पहले? खेत में। अपने खुद के खेत में? कहाँ पर? और वो मॉडल ऐसे ही रहेगा या कुछ सोचा है, कुछ ड्राइंग वगैरह है कि फुल स्केल वाला कैसा बन सकता है, कैसा दिखेगा? नहीं सर, हम इसे ओपनली कर रहे हैं घर पे, तो इसे हम ओपन ही रखा है। जब हम खेती में जब पानी गीला होता है ना वहाँ पे, तो हम इसको बॉक्स में भी सेटअप करके रख सकते हैं इसको, जिससे पानी ना लगे इसको। ठीक है संदेश, थैंक यू। संदेश, माझा आवाज येतोय? यस सर। जर तुझा हा जो प्रोजेक्ट आहे, हा जो प्रोडक्ट तू बनवलेला आहेस, जर तो तुला कमर्शियल म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर बनवायचा असेल तर तो पॉसिबल आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जसं सरांनी सांगितलं की जर शेतामध्ये तू वापरत असशील तर ते ओपन आहे, तर त्याच्या क्लोजिंग साठी म्हणजे त्याला पाण्यामुळे त्याच्याबद्दल काही होऊ नये, तर त्याच्यासाठी तुम्ही कसं केसिंग विसिंग करायचं काही ठरवलंय? म्हणजे त्याला एखादं आवरण कसल्या प्रकारचं देणार? प्लास्टिकचं. ओके. आणि जर मोठ्या प्रमाणात, हा ठीक आहे, तू कंटिन्यू कर. आपण प्लास्टिकचं एक आवरण द्यायचं त्याला, जसं ज्याने त्याच्या अंदर पाणी न जाईल आणि त्याचं सर्किट शॉर्ट न झाला पाहिजे. ओके, बरोबर आहे. आणि जर ह्याला म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती जर तुला हे करायचं असेल, प्रोडक्शन करायचं असेल तर, आणि ह्याचा वापर फक्त शेतातच होऊ शकतो की आपण हे वायरलेस स्विचेस आपण घरामध्ये सुद्धा वापरू शकतो? नाही, घरामध्ये पण सुद्धा वापरू शकतो. आता कोणाला त्रास होतोय असेल की उठताना, तर त्याला पण आपण युज करू शकतो. जसं की त्याला एक्झाम्पल टीव्ही बघायची आहे तर त्याला उठायची सुद्धा पण गरज नाही. आपण जर हे सेन्सर जर तिथे लावून ठेवलं तर आपण एका कॉलवर टीव्ही पण चालू करू शकतो. ओके, थँक्यू, गुड आन्सर. आणि खूप चांगलं प्रोजेक्ट आहे, खूप छान प्रोजेक्ट आहे. तू त्याच्यासाठी अजून पुढे हे स्केलेबल करण्यासाठी प्रयत्न कर. दॅट इज अ गुड वन. Thank you, participants, for your wonderful projects and judges to ask the questions making the participant feel comfortable. Now we move on to the third participant from the senior category, which is Ms. Manasvi Anil Gomse from School of Scholars, Kolkhet Road, Akola, Maharashtra.
I request the participants to come over, turn the camera on and present the presentation in front of the judges and the panel. It seems to be that the participant is having some technical issues on their end. So we would be showing up the video and in the form of presentation and waiting for the technical difficulties to go by. I am Manasvi Anil Gumase from 9th Standard School of Scholars, Kaulkhed, Akola, Maharashtra. India ranks second in the world in the production of fruits and vegetables after China. The loss is estimated up to 35 to 40% due to poor post-harvest management, which results in huge financial loss every year. India wastes fruits and vegetables equivalent to the consumption of United Kingdom. The harvesting of the crops is done at the physiological stage of the crop. It is highly perishable, so it gets deteriorated easily. The vendors are not only struggling for their day-to-day life issues, but which are not limited up to the storage, climate condition, and maintenance of goods. But the key issues are that the spoilage of their food is due to the long hours of exposure in heat and climatic condition, the long hour of standing. Okay, seems that the contestant has been rejoined the meeting, so we'll try and have her do the live demo as well after watching the video. Manasvi, welcome. Can you showcase your project, because the video had very low voice, so you're not audible. So I was not able to present anything. So now can I start, sir? Yeah. Yes, sir. First of all, I would like to wish a very happy Science Day to everyone. And my name is Manasvi Anil Gumase, and I'm studying in 9th Standard in School of Scholars, Kaulkhed, Akola, Maharashtra. First of all, the India ranks second in the world after the China in the production of vegetables and fruits. The loss is estimated up to 35 to 40% because of post-fast harvest management. It results into huge financial loss every year. So the India wastes fruits and vegetables, which is equivalent to the consumption of United Kingdoms. The harvestment of the crops is done at the time of physiological maturity stage. So they are perishable, so they get deteriorated quickly. The farmers are not only struggling with their day-to-day life issues, but they are also struggling, which is not limited up to the condition of climates, storage facilities, and maintenance of food. But the key issues are spoilage of goods due to long hours of exposure in its heat and in the climatic conditions. The second problem which they face is the long hours of standing. And the third is that there is no proper shade, which is very important at the time of summer and rainy season. So the objective of the model or the project is to design a improved model which will be the solution to the current problem, which is encountered by the lack of vendors such as health, comfort, climate, with the help of appropriate technology and optimized manufacturing function. So to overcome this problem, I have come with a solution of making a technocard. So this is my technocard. It is a model. So what is the here at the top? We have planted four solar panels. It will use it as an energy source,
And below it, we are having 2 LED bulbs, which will be used at a time of night at the scarcity of light. So the vendor will not also face the problem. And at the top, we also have a speaker. The speaker is for that the vendor will not need to speak anything. He or she will just need to record it, and whenever he wants to play, so it can be played, and the energy will be also consumed, which can be used for any further activities of the vendor. So now we are having a fan, which will be a very useful for, it will be like a comfort zone for the vendor, as he will be wandering street to street for selling his vegetables. He might get tired. So for his comfort zone, we have attached a fan here. Here we are having a thermostat. It will the content of it is the temperature and humidity, which is directly connected to the chamber, and it is a weighing machine. It will weigh the weight of the vegetables, and it is a vegetable display where we will display our vegetables. And for take-outing the other vegetables which will be stored in our this chamber, so for take-outing the minor vegetables, we can the facility is provided to open from here. And for take-outing the major vegetables, we are having airtight door. From here we can open it, and we can have major vegetables to put on here. Now, in this chamber, we are having stainless mesh chambers for storing our vegetables. In these 2 large containers, we can store our little vegetables like fenugreek or spinach, and in these small containers, we can store our bulbs like onion and potatoes. Here is a cool air inlet. Because of we have attached a thermoelectric cooler here, so the cool air will pass inside and the hot air will be removed through these 4 poles. These 4 poles are hollow poles, so with the help of these poles, the hot air which will be in this container, it will be removed. So this project will help the farmer in many ways, like it will minimize the loss of the farmer of the daily vegetables, and then it will also help to consume their energy. Thank you. Thank you, participant, for your wonderful project. It's going to help the vegetable vendors and the consumers as well. So now we're moving on to the next contestant who... Oh yeah, sorry about that. So before we move on, let's have the judges question the project. We are talking about vendors here. It's a great project again, but we are talking about vendors here. So what is the assumed cost of the particular cart? Because no. So the cost estimation is to up to 1,30,000. Are there any ways where you can make this cheaper, because that will be a big challenge for vendors? So the cost is it is in this cost the option is also added. It is like a bike. If we want a bike operating system or optional auto electric running system, the cost is also added. But if not wanted, so we can remove the cost. So it will be cheaper. Am I audible? Yes, sir. Your primary source of electricity is solar, right? Yes. So where you are going to store your batteries, because you are having a lighting system also, so we will require some batteries. So where you are going to store that batteries, first of all. And second thing, during, as you know, during rainy season there are less sunlight. So what will be the alternative? Like if solar is not working, then what is the second plan B? Sir, the alternative can be that here the vendor can store the electricity, store the energy, and the first question you have asked, that where to store the box, means where to store that battery. So he or she can store it in the chamber. It will first of all, the battery will not be more than 50. So the battery will not be more than
battery he wants to use at night, at daytime, so the battery will not be more than 12 watt, 50 ampere if he wants to use at daytime. And at the night time, if he wants to store it at the night time use, so 12 volt and 7 amperes. So it will not take more space and it is not heavy too. It is near 2 to 3 kgs. So the chamber can store it easily. Okay, thank you. Good afternoon, Manasvi. Good afternoon, sir. I liked your concept because this is much required for the vendors who roam a lot in a hot sun. So it's a very nice concept and a lot of things you have added into it. Firstly, when you talk about the cost, day before yesterday, I had a word with a vendor and I just was checking with him how much does he earn daily. So he said like, sir, mil jata hai 1000-1200 kama lete hain din ka. So when we had such kind of figures, will it be affordable to those people? That is the first question. Secondly, when you say that you can stock the vegetables in the below chamber, that will be a very huge investment for a vendor who is roaming on street to street, right? Small vendors I'm talking about. So what do you think about it? What are your points on that? So if the vendor want to increase his maximum income, so he might take a loan, and after, I'm sure that after taking a loan, he or she, the vendor will be able to have good income in this model. The vegetables will increase, the vegetable lifespan will increase. So definitely his income will increase as vegetables, his daily income source is vegetable selling. So by selling the vegetables, it will not get waste. First of all, which is a normal vendors take vegetables in morning until evening they are shrink down. So the first is that it will not shrink down. The lifespan will also increase. So I'm definitely sure that after taking loan from banks and after using this model, he will also increase his income. So and he can also return it with. I think it will be very helpful for him. All right. Thank you so much. Manasvi, Good afternoon, sir. Good work and good presentation. Have you thought of any alternate method to keep vegetables cool and with moisture in the cabinet underneath the top, which you just showcased? Because if you go electricity heavy, it will also increase your investment. So if you get an opportunity to build one full scale model, how you would approach it? So there are two questions in this single one. First is, have you thought of any alternate non-electric opportunities to keep the vegetable fresh? And if you get to build a full-scale model, what would be your approach? So to keep the vegetable fresh, in this model we have attached a thermoelectric cooler, which is based on the principle of it is a semiconductor, so it will move the heat from one side to another. So it is we can have the cold storages also in the steel mesh. So the other alternative I have not yet decided, but I think the thermoelectric cooler is working here. Thanks. Thank you to the participant who has just presented us the wonderful presentation and innovative ideas in their projects. We're going to be moving on to the next contestant's video, and after viewing the video, the judges panel is going to be open for questioning. So the next contestant is Mr. Mohammed Sukia from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Tumkur, Karnataka. Mohammed Sufyan of class 9, studying in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Tumkur. I have made this blind stick when I saw a blind person finding difficulty to cross a road and he was going to a medical store and he fell down and got injured himself by hitting a rock in front of him. He can't see what we can, so he is a blind person.
The blind person, I went and picked him up and asked him what happened. So he told, I am blind, I can't see what others can, and I am facing many problems in the society living. So I made this blind stick to help such blind persons. So this blind stick consists of Arduino Uno, ultrasonic sensors, wide moisture sensor, buzzer, battery and switch. This blind stick is divided into two parts, alerting module and sensing module. The Arduino Uno is the brain part of this blind stick, and this works as a brain, and it sends signals to the ultrasonic sensor and moisture sensor to verify any obstacle in front of the blind person. When the ultrasonic sensor sends the signal to the Arduino board sends the signals to the ultrasonic sensor. The ultrasonic sensor sends sound waves which hits the obstacle if there is any obstacle, and when the sound waves return back to the ultrasonic sensor, it sells the signals to the Arduino Uno that any obstacle is in front of the blind person, and the Arduino Uno sends the signal to the buzzer to beep the sound. This happens in a very fraction of seconds that the blind person can be alerted by any obstacle in front of them. This blind stick is made by materials using Arduino Uno, which is this as the brain part, ultrasonic sensors, these three sensors, which also helps the blind person to climb the step. As they have been adopted three sensors, they can sense there is any steps, and two of these sensed and tells that the blind person is having friend step in front of him, any step is there, and produces a different sound without any knowledge of any others. And this moisture sensor senses the water down of any in front of the blind person, and sends a different voice than these other two did. So it helps the blind person to segregate which is obstacle, which is steps, and which is water. So this buzzer is useful for beeping sound, which helps the blind person to sense alert himself. This is the switch which can be on to operate this switch board. Water sensor, which senses the water or anything fluid in front of the blind person. Battery, which provides power to the blind stick. Wires, which have been connected to use this blind stick in a proper way. Procedure to make this blind stick by using as the Arduino Uno used as a brain part, and which sends instruction to the sending module and alerting module. It identifies the obstacle and helps the blind person to help him to get any obstacle is in front of him. And this buzzer beeps a sound that is different, and I am showing the mechanism of the blind stick. A person who is blind can't see what we can. He is disabled by visually, and he faces many problems in the daily life. So for his problem, I have taken a solution, find a solution to help him. Here I have made the blind stick with the help of Arduino Uno, ultrasonic sensors, water sensor, buzzer, switch and power. This power gives the Arduino board power, and it gives instruction to the sensor module, which is ultrasonic sensor and water sensor. These sensors sense the obstacle and water, and gives a beep sound with the help of buzzer, and the blind person will be alerted that any obstacle or problem is ahead of him. And if he is deaf, the vibrating motor also helps him to find out any problem or any obstacle is in front of him. As you can see, the stick doesn't sense anything because there is no obstacle. As if the obstacle comes in front of the stick senses it, and the buzzer starts buzzing. So the blind person takes a turn, and as he takes a turn, there is another obstacle in front of him. So the sticks help him to alert that there is an obstacle. So he takes another turn. As he goes on, here the water is there, and the stick sense the water, and the different sound can help the blind person identify that there is a water in front of him, and he can be saved from slipping down.
As he can move, he senses that there is a step, and the different sound of buzzer helps him that says that there is a step, and he can easily climb the step. And as there is no buzzing, that says that no obstacle is ahead, and this helps the blind person to walk in. Thank you, participants, for your wonderful presentation. That is definitely going to help the differently abled people in order to basically see the world from the module's eye. Now I would like to invite the judges to ask them the questions which they have in their mind and basically give their opinion over this wonderful project which has been made. Am I audible? Yes, sir. Yeah. What is the weight of the stick? Sir, approx 200 to 500 grams, sir. 200 to 500 grams. Okay. All the sensors will be working on a battery, right? Yes, sir. And in case the battery got discharged, then how we will come to know? And is there any kind of a noise will come out, or how we are going to, like, the blind person will come to know that the battery is discharged from that particular app? So what is the solution for that? Sir, it has a mechanism when the battery discharges, it creates a sound like a double times beep sound. Okay. And Okay. it was a long beep. Yeah. Thank you. It's a very nice innovation. It definitely help disabled people to have it. And what will be the cost of manufacturing one stick? Because there are Sir, multiple sensors, right? yes, sir, but they are not more costly. It is very cost efficient, and we can do this one stick in below 2000, about maximum 2500. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. There's a great project again for the handicapped people, but talking about such kind of innovations are already available in the market. My concern was, what about when you're using it in heavy sunlight and the UV radiation from the sun fall on the sensors, which is basically an IR? It detects, it does not detect objects after that. How are you going to overcome such problems? Because after a while, when I talk about IR sensors, this is a very common problem which we face in the industry. Sir, actually, we have used ultrasound sensor. No, sir. We think probably no any problems can come, sir. Ultrasound sensors. So we thought this problem would come, so we didn't use the IR sensors. So instead of that, we use this ultrasound. Sir, these send sound waves to the obstacle or the object present in front of the blind person. And for that, you should also be aware, if you are using ultrasound, there is a variable, there is a very limited boundary, which things can bound sound, which things can absorb. So if I talk about, if you are talking about a land where things like, if I talk about complete black objects which absorb sound as well, photons and sounds, your object will not detect sound. So is there any limitations कि हाँ आप इतने level का sound को beep consider करेंगे, इसके नीचे का sound को beep consider नहीं करेंगे? Is there a Yes, sir. limitation? While coding, we are setting range. So the sound will be ranged. So according to the distance, the sound will be created, loudness. So maximum 1.5 to 2 meters we can detect the object. That depends on how the person is. Means if he is elderly, means we have to set the range differently. If he is younger, means we have to set the range differently. Okay, that answers my question. Yeah. Hello, kids, and good work and good model. What you have presented today is basically a tabletop project. So that's basically where you test your concepts of project. So since you have succeeded in testing the tabletop model, have you thought of making an actual usable product out of it? Have you made any designs or paper drawings, at least to start with? How do you plan? So let's say if you uh, get an opportunity to win the seed money from this competition, or if your school agrees to fund your project, what are your plans? So actually, we have a 3D printer, and we are going to design it in software, and
we are going to print everything that plastic pipe. Instead of plastic pipe, we are going to use 3D printed parts, and we are going to fix every part in particular places, and we are going to make user friendly, sir. So have you designed any casing or a container? Right now you have sensors all over the place. In a Yes, yes. tabletop project, it is okay, everything is open. But have you at least made a line sketch or a drawing of the end product? Sir, the design is there, but we have to fix all the sensors inside of it. It is our plan that to make it not by seen by inside. So we have to plan to use lightweighted products still to reduce its weight and also simple design so it is user friendly for the blind person. What is the cost you incurred to build this? So it has maximum 2,500. And what will be the approximate end cost of the final product? Have you estimated or planned for it? Yes, sir. 2,500 to 3,000. In between this, it will be Yes, this. sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Good afternoon. I just have a small question because I guess all the questions are already answered. How long did you take to make this entire stick? Sir, actually, it take only 1 day or 2 days, sir. So Okay. with every components in hand, we made it in 1 day and 2 days. Yes, sir. Because in nowadays, sir, we are having different timetables, sir. We have to follow different. We have to follow different activities at different times, sir. So we are getting daily 2 hours. We are getting, sir. We spent 4 hours per day. Then we completed it, sir. So you made it in 1 day, are you saying that? So in 2 days. 2 days, sir. In 2 Means days. we actually spent 4 hours, sir. Okay. Coding also it took some. I was doing coding part. He was doing hardware part, sir. All right. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the participants for their wonderful innovation and the judges for throwing the light on that innovation. Now we have the last participant, as we say, last but not least, we have the participant that is Mr. Anshul Manikar from Bhavna BP Vidya Mandir, Civil Lines, Nagpur, Maharashtra. we would like the participant to turn on their camera and present their project in front of the judges. Good afternoon, dear judges. I am Anshul Manekar from Bhavan's BP Vidya Mandir Civil Lines, Nagpur, and today I will be presenting my model, Build-Aware. Today, minerals like iron and coal have become a vital resource for humankind, but extracting them is not at all an easy task. Miners all around the world face a lot of issues during their work, but one of the prominent issues that has turned into an occupational hazard is heat. Underground mines can go up to 4 kilometers deep. At this depth, the temperature rises beyond 50 degrees Celsius. Such a high temperature not only dehydrates the body, but also can cause serious illness like heat stroke. The mining industry also uses a lot of heavy machinery, and these machines can lead to fatal injuries if the miners working nearby are not aware of this. That's why I have made Build-Aware. Build-Aware is a safety variable that uses that uses thermistor to sense the underground temperature and an ultrasonic sensor to sense the objects. Now let's see the working of my model. Now I've turned it on. So this is the ultrasonic sensor, and like as soon as the object moves near it, it will buzz. Now as you can see, the ultrasonic sensor has sensed the presence of the object. Now I will show you the working of the heat sensor. As soon as the temperature crosses 40 degrees Celsius, that is a threshold value for catching heat stroke, the buzzer rings in order to alert the miner that the temperature has crossed a safer limit and you should be aware about it. In this way, Build-Aware can help miners not only
protect themselves from heat related illness like heat stroke, but also protect themselves from the heavy machinery and the objects that they use in their work. Thank you. Good afternoon, Anshul. Good afternoon, sir. Anshul, I very well got the second concept, that is about the heat. I didn't get the first concept which you talked about, that is getting any object. Yeah. So what happens in places like mines or even a construction site? So they use a lot of heavy machinery and there is a lot of vibration and sounds. So sometimes people get hurt due to this. Like if they are working near the machinery and they are not aware of it, so they might get hurt. So are you saying there's a huge noise, there's a huge machinery, and they are not aware of it? Yeah, like not exactly, but they they're not alert of it. They are engaged in their work, and then something falls on them. Okay. So, okay, can you show it again? Can you show the sensor part again? Putting Yeah, an yeah, object next to it. yeah. Okay. So let's say this is an object and Mm. it's coming towards the sensor. To just turn it on, I'm so sorry. So let's see, this is an object and now it has sensed the object. So Anshul, my question is, by the time the sensor will sense, the object has already hit the person. no, So, this sensor has a less range because it's used for Arduino. But when I'll scale up the model, so we can use high range sensor, which will have like beyond 10 meters range like that. okay. It is just the very first prototype of the model. That's why the range is less. So this is the first type. Okay. Yeah. So this need to enhance further. All right. Good. I mean, a good concept. All right. Thank you, Anshul. Yeah. My concern is again, it's great technology, but my concern is again related to Surjit. So said, basically, if you are even extending the range to 10 meters, the problem is there are still machinery, as you just told, there are still machineries involved and infrastructure there that will be sensed and beeped. So how will you distinguish between Yeah. machinery and an object which is coming towards? Yeah. So for the future, versions of this model, I've planned to put an AI in it. So like the AI will basically distinguish between what is harmful for you and what isn't harmful. Oh, so that is great. That is great. That was all I wanted to ask. Hi, I just wanted to know what is the cost? It's like around 1,000 rupees. And if you are if you are inputting this AI and all these sensors, still it is 1,000 rupees. No, it can exceed like till then 2,000, around 2,000 it can go. Okay. But I'll make sure that I keep it the cheapest version of. Yes, that is the answer. Yeah, thanks. Thank you to the participant who has given us the wonderful and innovative idea if to betterment the life of the miners of this country. And well, that basically ends the presentations by the participants for today's event. It's quite wonderful and amazing to see these projects and thoughts and prototype models which are pretty innovative and inventive. They are going to solve a lot of modern day problems, and they are going to be really amazing if we actually see them in the future and know where they originated from. Now we're going to be going ahead and basically moving on with the event with inviting Mr. Sujit Chaudhary to share a few words.
Okay, thank you. All right. Good afternoon to each and everyone present in this entire project. I would like to thank Jigyasa and all the students and teachers and principals who are involved in this. First of all, this is a very nice platform and it has bring a lot of talent. Today, when I look at the projects of the students, I feel that we were nowhere when we were in class 7th, 8th. We never thought of it. But this young generation is entirely different from us. They have reached the goal where we didn't even thought of when we were of this age. A lot of creativity, a lot of innovation. All thanks to the teachers and the masters who have passed on the entire information and knowledge to them. So with that, I will not take too long. All the best. This is a journey. Please keep doing it. Please keep enhancing your projects and your products. And definitely you will come up with bright colors. With that, I will thank each and everyone and stay safe. Thank you, sir. Now, I call upon Dr. Jadin Wahane to kindly address the contestants and students across. Again, it was my honor to be a part of this event, of the Jigyasa event, and to be among you guys, to see such great projects, to see such great minds putting all their efforts in innovating small things, which is going to make our big nation, starting from the military to health devices to agriculture. No, we saw a lot of variety, and I was really shocked because if I talk about my journey being a scientist till now, it all started back then when I was, a kid, and I was presenting in exhibitions and doing all those stuff. So what I see is a craze of, upcoming scientists, upcoming, generation of science. If I talk about, so like if even if I talk about the chief guest who was Jing Kotawa, the way we meet was the same. I was in an exhibition, but I was soon called as judge, and he was also there, and we just had kind of a connect of how the students are going crazy about science these days, and we talked about that stuff. And what I see in this generation particular is, when we used to make science exhibitions and science projects, it used to be like acid based reactions and basic stuff like that. But now when you see, kids at this age are making not just science projects, but they are, towards the edge of entrepreneurship. You know, the things they're making right now is basically a product which can be launched at a market with a very small research and development to be done. So with I'd like to congratulate all the students for that they did an incredible job here, and it's really great to see you guys there. Thank you. Thank you, Dr. Jotin, to give such a wonderful speech about the current people. And yes, people are actually on a really small age are really close to entrepreneurship. I completely agree with that point. And now we shall move on and invite over Mr. Arjit if he wants to share a few words and opinions of Jigyasa on Jigyasa 2022 platform. Yeah, it was a very wonderful experience for me. Like the students are come up with a lot of great innovative idea. As sir said, if you innovate something, you become an entrepreneur. And I just wanted to have all the students supposed to be an entrepreneur. They're supposed to be an innovator, scientist. You are the future of the country. So come up with the innovation. Don't stop here. There is a long way to go. So I will just give you a best of luck for this and keep up your good work. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, as we have come to the end of the event, I would like to give some
after event announcements, as we would like to say. The results of this competition will be displayed on 5th March 2022 at 12:30 p.m. IST Indian Standard Time. We also have a category for People's Choice Awards where 5 projects ranked from 6 to 10 in each group, juniors and seniors, will be displayed on People's Choice page. The highest number of votes received for the project will receive an appreciation certificate. So I invite every single person watching this at this moment to basically after the event ends, go towards the site of mgsnagpur.org, go to the Jigyasa page and look at the exhibition and all the great projects in great detail, and also vote for your favorite projects and make them the winner of the People's Choice Award and the appreciation certificate. Thank you. सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम हमारी साइट पर 5 मार्च 2022 की दोपहर 12:30 बजे IST पर प्रदर्शित किए जाएंगे। हमारे पास पीपल्स चॉइस के लिए एक श्रेणी भी है जिसमें प्रत्येक समूह जूनियर और सीनियर में 6 से 10 रैंक वाली 5 परियोजनाएं हमारे पीपल्स चॉइस पेज पर प्रदर्शित की जाएंगी। परियोजना के लिए प्राप्त सबसे अधिक मतों को एक प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारा एग्जीबिशन देखें और अपना वोट दें। Also, before we move forward, I would like to add one more note to this event is that the People's Choice Awards are going to be the results for the People's Choice Awards are going to be released on 4th March 2022 at 12:30 p.m. IST. That is one day before the actual results for the Jigyasa 2022 come in. As we come to the end of the program, however, this is the beginning of our exhibition, which we are sure has been an inspiration to hundreds of our viewers. There are few people whom we would like to appreciate. We thank the management, staff, students, and parents of the participating schools whose efforts have been displayed on our exhibition page. We thank the honorable chief guests, esteemed judges, and our directors for their valuable time. Most of all, we would like to thank each and every one of you who have taken out your time for this program. Last but not the least, we thank clerical and non-clerical staff for their never-ending support and making this program a success. Thank you, everyone, and that marks the end of this event.